Okay, Janab, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Alternative Management class once again. We're discussing the case John Mundell. John Mundell, Janab, thoda sa kuch record hone se reh gaya, but once again coming back. So he used to visit Rome. और जो ये जो EOC का abbreviation में भूल गया हूँ भी पता चल जाएगा. Economy of कुछ ऐसा था, यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जो कम्युनिटी में हेल्प करना चाह रहे हैं. And he had always wanted to start a business, and inspired and intrigued by Chiara Lubich. इस तहरीक की जो बानी थी ना फोकुलारा मूवमेंट की, वो खातून थी, उनकी वीडियो में दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में. चियारा लुबिख. He asked himself if perhaps the time had come to make a change. He liked EOC's ambitious yet practical approach, and he felt sure that if he were to start a business, it could succeed as an EOC enterprise. चियारा लुबिख साहब ये कहती थी कि अरे अल्लाह के बंदो, तुम जितने भी पैसा कमाते हो या जितने भी कारोबार करते हो, तुम ये नियत करो कि तुम इस नियत से कारोबार करोगे कि उसका एक हिस्सा तुम इंसानों की खिदमत में स्पेंड करोगे ताकि खुदा राजी हो जाए. So strong was the EOC attraction that he even wondered if he had been led to the conference just to hear the invitation. एक सुबह को, soon after their trip to Rome, एक सुबह को जब जॉन साहब उठे तो उनके जनाब बाजू में शदीद दर्द शुरू हो गई. Followed quickly by another. डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि ये तो आपको सीवियर इंडाइजेशन हुई है, लेकिन the experience of an apparent heart attack affected John deeply. और लेकिन जो झटका लगा ना जॉन साहब को दर्द का, उसने उनको हिला के रख दिया. डॉक्टर्स ने अगर से कहा कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन उस दर्द ने जनरेटेड a series of soul searching questions. What if I were to die right now? अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या होगा? What could I say I have done with my life? What do I want to do? What do I want to do? मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या मैं अपना कोई कारोबार करना चाहता हूँ? मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? ये सवाल पैदा हो गए. Past hesitation and uncertainty quickly gave way to determination. जुर्रत पैदा हो गई, sense of urgency आ गई. The time had come to make a change. John easily won. अपनी बेगम की सपोर्ट उसको जल्दी मिल गई. Not for starting just any business, but an EOC. हमें ऐसा बिजनेस करेंगे जो Foculari Movement के प्रिंसिपल्स के बेस पर चलेगा. Something even more meaningful. Before he had time to tell his boss about his plan, अभी ये सोच ही रहा है, ये तो अभी सोचना शुरू किया है कि बॉस ने बेचना है कंपनी को. उसके एक वकील ने, अब देखें ना खुदा की कुदरत, देखें क्या होता है. उसका वाशिंगटन डीसी से एक वकील है, वो कहता है कि जॉन यार, मैंने एक मुकदमे में ना, मुझे एक एक्सपर्ट इंजीनियर चाहिए जो एक इंजीनियरिंग का मुकदमा है जो एक विटनेस बन सके. जॉन ने कहा कि यार वो तो छोड़ना चाह रहा है जॉब को. लॉयर ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए. तुम इंडिविजुअल हैसियत से आ जाओ. एंड विल नीड यू फॉर एटलीस्ट 4 महीने के लिए चाहिए होगा. अब ये देखिए ना, इधर से उसको ये, उधर से वो रोम जाता है, ख्याल आता है, उधर से बाजू में दर्द होता है. रोम जाता है, ख्यालात आते हैं, कुछ आइडियाज आते हैं, बाजू में दर्द होता है, फिर सोल सर्चिंग क्वेश्चंस पैदा होते हैं. और वो बॉस कहता है कि मैं कंपनी बेचना चाह रहा हूँ, और ये चीजें देखें इकट्ठी कैसे हो रही है. और वकील का फोन आ जाता है कि यार 4 महीने के लिए जॉब चाहिए, और अगले दिन वो रिजाइन कर देता है. सीईओ एक्सेप्ट कर लेता है रिग्रेट के साथ. वो कहता है कि यार मैं विश करता हूँ कि तुम कभी दोबारा इकट्ठे होंगे. लेकिन 2 घंटे के बाद ही वकील का फोन आ जाता है कि यार वो मेरा केस सेटल हो गया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही. वो फिर झटका लग जाता है. दोनों मियाँ बीवी ने लॉन्ग टर्म कॉन्सिडरेशंस की होती हैं कि बच्चों को हम जॉब छोड़ रहे हैं, 4 बच्चों को पढ़ाई कहाँ से पैसे देंगे,
बिल कहाँ से देने हैं, घर का किराया कहाँ से देंगे, लेकिन वो ये तय कर लेते हैं कि हाउ टू लिव विद इन देयर मींस, चादर देखकर कैसे पाँव फैलाना है। वो कहते हैं कंसल्टिंग वर्क के लिए हमें कौन सा कोई इमीडिएटली पैसे चाहिए, हमने घर से काम कर लेंगे, देयर वाज ऑफिस स्पेस एट होम, और जनाब अगर चीजें काम ना की तो जॉन दोबारा जॉब तलाश कर लेगा। तो 1.5-2 साल के लिए कैश का कोई मसला नहीं है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं अफोर्डेबल वास्ट। वो कहते हैं 90 दिन जो है ना, 90 डेज एक टेस्ट है, अगर उस 90 दिनों में कुछ कोई चीज ना हुई तो फिर हम वापस जॉब पे चले जाएंगे। टेस्ट ही है ना, एक्सपेरिमेंट ही है, हमारा क्या है। ठीक है जी। तो अब ये देखिए क्या होता है कि अब ये तैयारी हो रही विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ही उसको एक कॉल आ जाती है जिसका वो इंतजार कर रहा था। एक आदमी कहता है, आई हर्ड यू स्टार्टिंग योर ओन शॉप, said John's first client. Call me Monday, I have a project for you. Jobs flowed in steadily from the start. While working on his first contracts, John hired a lawyer. एक lawyer hire करके कंपनी को incorporate कर लेता है, और चैप्टर एस कॉर्पोरेशन जो है। अबाउट दिस टाइम जॉन जो है अपने दोस्त जिम बार्कर को हायर कर लेता है, जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट भी है, फॉर्मर कोलीग भी है, और अट्रैक्टेड बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑन हाई टेक प्रोजेक्ट्स का शौक भी है उन्हें। John saw Jim's unique set of skills as a complement to his own. Through their collaboration, though their collaboration began as a contract work, contractor बन जाते हैं। Jim soon joined. Jim जो है इसकी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है फुल टाइम एज एन एवेंजेलिकल क्रिश्चियन। जिम जो है ना वो भी इनके EEOC फोकुलारी मूवमेंट की वैल्यूज को अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। जॉन उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई हमारा मकसद ये है, and so on and so forth. Though surviving is the first necessary goal for the company from the beginning, John also hoped to develop practices and a model for doing business that would be noticed. वो कहते हैं कि यार हम चाहते हैं कि पैसा तो बनाएं, लेकिन ऐसा काम करें जो क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर सकें। Instead of talking extensively about the EOC connection, John planned to just live it. वो कहता है कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमें जुबान से ज्यादा तबलीग करने की जरूरत नहीं है, अमल से तबलीग करेंगे। तो हम जो है ना, as the folklore saying went, the right time to share the EOC story with others would come when someone asked. ये लोग हमसे खुद पूछेंगे कि आप मोहब्बत क्यों करते हैं, आप रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, आपका मैनर्स अच्छे क्यों हैं। वो कहते हैं जुबान से तबलीग क्या करना, हम अमल से बात करेंगे। तो लोग हमसे पूछेंगे, why do you do things this way? There would be no preaching, no persuading others to accept his values. EOC practices must speak for themselves. वो कहते हैं, जॉन साहब ये कहते हैं, more than growing big, it was growing a good company. It was growing a good company that mattered. Good in quality, in relations with its employees and subcontractors, and of course in serving clients. Look at this, यार। वकास साहब, आबिस रजा, नवीद गुडल साहब, ये किस दुनिया के आदमी है। देखें, मोर देन ग्रोइंग बिग, हमें बहुत बड़ा इदारा नहीं बनना, हमें क्या करना है, हमें अच्छा बनने में ग्रो करना है। क्वालिटी सही हो, अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप अच्छे हों, सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ। लुक एट दिस, ये 12 साल की मेहनत के बाद वो जो कंपनी चली थी, 12 साल के बाद क्या होता है। In 2007, Mundell employed 12 professionals in science and engineering, 2 technical specialists, office manager, 2 administrative persons, geology, civil, biology, agriculture. When necessary, the company hired contract employees, engineers and scientists to supplement staff capabilities. Subcontract भी कर देते थे। ठीक है जी। Test samples typically went to analytical laboratories. Drilling companies were hired for wells and borings. Mundell Associates business depended on quality and prudent pricing. इनकी कामयाबी का राज क्या था? क्वालिटी और मुनासिब पैसे। क्वालिटी और मुनासिब पैसे, as well as a flow of contracts. Flow of contracts कहाँ से आते थे? Based on solid
long-term relationships. Wow. long-term relationships जनाब वकास साहब कब होते हैं जनाब? सामा जमील साहब, या आपको जवाब देना होगा, जो नहीं बोलेंगे इसका मतलब है वो एब्सेंट है. हाँ जी, वो हम उज़ैर खान साहब, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप का क्या मतलब है? सुनैरा मलिक साहिबा, कैन सर यू आप हियर क्या मी? सवाल रिपीट करेंगे फिर से? हाँ जी, तो ये कह रहे थे ना कि हमारी कामयाबी का राज था प्रूडेंट प्राइसिंग और क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. सर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स उनसे भी हो सकते हैं, अपने सप्लायर से, वेंडर से, What do you आपके mean by अपने इवन long-term relationships? लॉन्ग टर्म सर रिलेशनशिप्स के जो आप अपने लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बनाते हैं ना, जिनके साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप होती है, जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको क्वालिटी का सामान देंगे और अच्छे रेट्स देंगे, तो आपकी एक रिलेशनशिप बिल्डिंग उनसे हो जाती है और लॉन्ग टर्म आपको जो है ना वो आपके साथ चलते हैं इस तरह के लोग. सर Then in long-term बेसिकली तो relation, एक साल से ज्यादा के कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम लोग करते हैं कि 3 इयर्स का अपने ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेक श्योर करते हैं कि 3 साल से ज्यादा का करें, क्योंकि फिक्स्ड एसेट होता है, उसके पैसे निकल जाए, उनको भी एक वो रहता है कि हाँ यार ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंडिंग रहेंगे, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट. एक तो यह कि आपने 3 साल पहले, लेकिन अगर आप काम शुरू किया, हाउ वुड यू इंश्योर योर रिलेशनशिप ऐसा होगा यार लॉन्ग टर्म काम करना है इनके साथ, तो फिर आपके रवैये में क्या चेंज आएगी? ह्यूमिलिटी आएगी और हम उनके साथ जो है फेयर और ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, हम उनके साथ सर एज अ काम. पार्टनर लेके चलेंगे उनको, एज अ पार्टनर लेकर चलेंगे, एज अ Exactly. कॉन्ट्रैक्टर लेके नहीं चलेंगे. सर मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये है कि अगर लेट सपोज आप ग्रो कर रहे हो तो आपके साथ आपके कस्टमर, सप्लायर, वेंडर आपके साथ साथ ग्रो करने चाहिए. जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप अपने एम्प्लॉयज पे कर रहे हो, एग्जैक्टली वही आप अपने वेंडर्स पे भी करने. माशाल्लाह, वंडरफुल वकास साहब, थैंक यू. बिल्कुल सही. मेरा ख्याल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं तो आप उसको जितवाएं. आप यू हैव टू मेक हिम विन. आपको दिन रात उनके साथ अवेलेबल रहना होगा, उनके साथ खड़े रहना होगा, अपने टेलीफोन को ऑन रखना होगा, कीमत भी सस्ती देनी होगी, सर्विसेज भी शानदार देनी होगी, सच बोलना होगा, उनके साथ खड़ा रहना होगा, तो फिर लॉन्ग टर्म चीजें बनेगी. तो बिल्कुल सही फरमाया. और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद में अगर ये ना हो, अगर वो टेलीफोन ही ना उठाएं, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा. आपको और जितना इसके हो, साथ ये सर इसके साथ ये भी सर कि सर एक जरूरी कमेंट नहीं कि यहाँ सिर्फ पे अच्छे टाइम में उनके साथ वो खड़े रहें. अगर कभी कोई डाउनफॉल आता है, कोई मुसीबत में है, तो उनको सपोर्ट करें. नहीं जी, हम नहीं पीछे हटने वाले. कोई बुरा टाइम आया तो साथ खड़े रहें. कभी भी यस सर, नुकसान बिल्कुल. बर्दाश्त. सॉरी यहाँ पे सर, सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था, वो ये कि आप जी जिसमें कोविड का टाइम आया तो इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का लोगों को बड़ा पता चला कि जब बड़ी कंपनीज के पास के ऊपर बुरा वक्त आया तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को वो फुलफिल नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए, जिसकी वजह से फिर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रिकल डाउन भी हुई और मतलब इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ कि जब वो कोविड के बाद खुला तो फिर सप्लाई चेन के इश्यूज आए. तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का ये भी मकसद है कि जब आपके ऊपर अच्छा वक्त है तब तो सब एक दूसरे का साथ देते हैं, बट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ तो फिर आपका पता चलता है कि आपके रिलेशनशिप्स क्या हैं. तो एक मेरे ख्याल से ये सर ये कि जैसे हमारे कुछ सप्लायर्स होते हैं, उनकी टीयर्स होती हैं. टीयर 1 सप्लायर है, टीयर 2 सप्लायर है. तो आजकल कुछ जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बेसिकली टीयर 2 तक जा रही हैं. और दूसरा ये है कि जो इम्प्रूवमेंट एरियाज वो अपने अंदर देखते हैं या अपने सप्लायर्स में देखते हैं इम्प्रूवमेंट एरियाज, वो वहाँ पे फैकल्टी में विजिट करके और देन उनको इम्प्रूवमेंट एरियाज हाईलाइट करके देन उनमें हेल्प आउट करते हैं. लेट सपोज मैंने वर्क तो नहीं किया इंडस मोटर्स में, बट वो अपने जो भी सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनके साथ इस तरह से कोलैबोरेट करके या कोई प्रोजेक्ट वगैरह करके अल्टीमेटली उसको इंडस्ट्री को फायदा है, आपको खुद भी फायदा हो रहा होता है उससे. जी जी, माशाल्लाह. तो जनाब ये 12 साल के बाद फिर क्या हुआ? ये शुरू में विद इन ईयर ऑफ स्टार्टअप वो एक लीज स्पेस में चलेगी. लीज का फायदा क्या होता है कि खर्चा कम होता है और वो ग्रेजुअली चीज आपकी हो जाती है. और उनकी जो अहलिया थी, जोली साहबा, वो आर्किटेक्चर थी, तो उन्होंने वहां पर उस पूरे दफ्तर को बाग बना दिया, गार्डन बना दिया. The structure circle design in natural spaces complete with trees and green and spaces, man-made streams,
and flowers work well for an environmental consulting business. Every office in the new space had a door and windows with a view for the occupant, a garden, a grassy lawn, or a shady street. Julie Mundell stepped in to help execute the move with minimal disruption, and her office paid off. तो बेगम साहबा भी engage हो गई। तो जनाब ये थोड़ा सा मैं अब आपको उनकी वीडियो दिखाता हूँ और फिर बाकी केस हम पढ़ेंगे कि इसमें खूबियाँ क्या थी। तो let me just quickly let me just quickly move जॉन साहब। तो जॉन साहब की वीडियो देख लेते हैं। तो आप जरा इस पर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ना मौका मिलेगा थोड़ा सा कमेंट करने का कि आपने जॉन साहब में क्या गौर से चीजें देखी। तो उसका तरीका पर ये होगा कि रेज योर हैंड, यहाँ पर जो रेज योर हैंड से जरा वो आसानी हो जाएगी हमें, एंड वी विल नॉट बी। तो जनाब 7 मिनट की वीडियो है, 6-7 मिनट की, एंड लेट्स वॉच। Hey John, good evening. How are you today? I'm doing well, thanks. Okay, we are here in the outskirts of Nairobi at this convention of EOC, which you will explain. But first of all, can you introduce yourself, where you come from, and a couple sentences more? Sure. My name is John Mundell, and I'm from Indianapolis, Indiana, and I run a business called Mundell and Associates. It's an environmental consulting company that helps clean up the earth, pollution of soil and groundwater. But we're also part of a worldwide network of businesses linked to the economy of communion, which is a new social and economic initiative worldwide that helps to alleviate poverty in communities all around the world. Now, you mentioned this word economy of communion. People usually identify communion with, communion church or whatever, but what's the characteristic of the companies associated with this new economic paradigm, one could say? Really, the first thing is that it really amounts to the business owner trying to select or choose for himself a business lifestyle of communion. And what I mean by that is to run a business that's very human-centered instead of profit-centered, in which the company atmosphere, how we treat each other, the building a family-like atmosphere in the company really dominates the environment within the company. And once that happens, we really try to look at the company's relationship to the local community, where we can help, where we can build bridges, how we can support the community around the company to become more of a community. And then thirdly, on the global level, the companies also share their profits with development projects all around the world. We pool our profits together. There are some 860 businesses worldwide. And what we really try to do is bring people out of poverty by developing relationships wherever we are with those in need, and in such a way that they can help bring themselves out. And we have seen these days here in Nairobi a lot of examples here in Africa or Latin America or all over the world, precisely of this philosophy implemented in these more quote-unquote more needy or in development countries. But I wanted to ask you, can you tell us something about your relationship with your employees or people in your company? Sure. Well, in a typical company, a president of a company may not have relationships other than formal business relationships with his employees, a contract where they work for you and you pay them money. In our company, in an EOC company, we really try to pay attention to each employee's development, really try to see them as part of ourselves. It's really, as I said before, to try to create this family atmosphere in which everyone has the ability to participate, to give and to receive within the company. And so, in essence, myself and my wife, who is also part of the company, we really try to look at our employees as extensions of our family, and to treat them as we would want to be treated. Live the golden rule in business and in the
work environment. You mentioned to me a few days ago an interesting example how to build bridges, quote unquote, with your employees, aside from being the boss. Very simple, but I liked because it was down to earth. Can you mention here for our viewers? Well, I'm trying to remember which example I gave you, but cleaning or yes. coffee. Oh, yeah, very good. Yeah, this was just a very simple experience. It's very typical of our businesses, but one day I came into the work kitchen, and the kitchen was a mess. I mean, the dishes in the sink were filled to the highest point. The table was not clean. The refrigerator had old lunches still in it, and so I thought, hey, someone needs to clean this up. But I really thought, as an act of love for my employees, maybe I should do that. So one day they were out of the office, and I went into the kitchen. I mopped the floor, did the dishes, cleaned the sinks, and then went back to work. And after lunch, the employees came back, and they went in the kitchen, and they were like amazed, like, oh my gosh, who cleaned this mess up, And they finally realized it was the president of the company. And a few hours later, I noticed that people were taking the time to clean up other messes around the office. The copy room had been messy, and someone took the time to straighten it up. And by the end of the day, there was kind of like this peace that kind of came over the company because everything was in order, and it all started from this little act of love, really, to try to do what I would want someone to do for me. And we find that happens in the companies. When that happens, a special type of atmosphere happens, and if you're a Christian or a Catholic, you can say, with this mutual love back and forth between employees, the presence of God can actually be there. Where 2 or 3 are gathered in my name, there am I. And so we really try to build that atmosphere of mutual love. This is for those who identify with Christianity, but what you're saying also, it's an application of the universal golden rule, right? Do unto others what you would like, etc., right? Well, yes, absolutely. I mean, in fact, we have employees that have been Muslim, Hindu, and Christian, and non-believers. And so, really, I think when people see this golden rule lived, they experience it as truth, And so we found that kind of principle can be lived by everyone. John, I thank you very much because you have said quite a few decisively countercultural things, both in terms of the philosophy of the company and then personal side. So I thank you very much on behalf of the viewers who are going to watch this video. Oh, thank you. Well, thank you. I appreciate you asking and having a chance to talk with you guys today. Okay, thanks. जी जनाब, मैं इसको जरा बंद कर लूँ जी. Anybody would like to share जनाब, आपकी क्या एक CEO को देखा आपने, आपको कैसा लगा जनाब? He's not an ordinary person. He's an undergrad, he's a master's, he's a PhD. He has developed a company for $100 million. $100 million की कंपनी ग्रो कर चुके हैं, फिर अपनी कंपनी खोली, और ये जनाब हाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग करते हैं और बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. जी जनाब, नवीद गोटेल साहब. Sir, can you hear me? जी 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 बिल्कुल. Perfect. Sir, while watching this video, I was thinking of one thing. Like SPP होता है या एक और like institute है. Then we have like director training program, especially in IBA, CEE, we also have director training program. So I really think that this video should be the part of that director training program. Every director should know about this thing. I mean, the way that Mundell, John Mundell, began his company, and like the way he said the company is like more than management center, it's like human center. It's like working, definitely working for both of the side. I mean, definitely they're concerned about the profit, but they are also concerned that the profit they are going to earn is also going to be spent for the benefit of the society. Like they were saying like that they actually went out from the culture of having to the culture of giving. This was benefiting the society, making the society healthier, happy society, like the saying that the atmosphere of love and mutual love. So like
that thing that definitely came into my mind. I was thinking that I should pick this idea for the CW Director Training Program. This video at least should be the part of it. I mean, 7 minutes. चला उसका डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा आइडिया आपका जनाब नवीद साहब. ये बिल्कुल मेरा भी यही आइडिया था. मैंने भी चूंकि डायरेक्टर का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है, उसमें कोई चीज ऐसी शामिल नहीं है यार. Exactly, sir. Exactly. मैंने 3-4 लाख रुपए खर्च करके किया था. I'm on the board. तो वो मैंने तो ये आप उनको आइडिया दें भाई प्लीज. I am sure definitely going to give it to Dr. Ramesh. और भी केसेस अभी आएंगे ना अगले सेशन में, और भी आने वाले हैं आज. तो देखिए दिस इज सो इम्पोर्टेंट. जी एनीबॉडी एल्स? जी नवीद साहब बहुत शुक्रिया फॉर योर कमेंट्स. आपने क्या महसूस किया सर? ये देखें ये क्या कह रहे हैं साहब. इनकी आवाज, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके कपड़े क्या पुकार कर कह रहे हैं. इनके कपड़े, इनकी. जी अब्दुल्ला साहब, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला. अस्सलाम वालेकुम सर. सर एक कंपनी का जो कल्चर होता है ना, वो एक टॉप से बनाया जाता है. तो जिस तरीके से उन्होंने मिसाल दी कि मैंने डिशेस क्लीन करी, चीजें साफ करी, सब कुछ करने का, एक तो उन्होंने बिल्कुल बात करी कि हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, वो करते हैं, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट लोगों के बारे में सोचने के अलावा भी उन्होंने जो कल्चर डेवलप किया है वो खुद एक तरीके से जो है ना मिसाल बन रहे हैं लोगों के लिए कि यार देखो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से काम करें. ठीक, माशाल्लाह. तो जनाब अभी इनकी केस दोबारा पढ़ेंगे. एक छोटी सी वीडियो ये जिस से मुतासर हुए ना चियारा लुबिख, वो भी आपको दिखा दूं ताकि वो भी थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि वो चियारा लुबिख वो खातून कौन थी. लेट मी शो इफ आई थिंक आई एम एबल टू गेट इट देयर. चियारा लुबिख आई थिंक. जी ये भी थोड़ा सा क्रिश्चियंस भी हमारे भाई हैं और इनको भी हम थोड़ा सा सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि आई होप यू द साउंड विल बी देयर. In 1920, at the age of 23, she consecrated her life to God. It was the founding event of the birth and development of one of the largest ecclesial movements of our time, the Foculari Movement. The adventure of the Foculari Movement began in the context of World War II. We saw that all the small dreams we had were going up in smoke too. We were faced with the fact that everything fades, that everything is vanity of vanities, as the Bible says. But I felt as if someone was asking me, is there an ideal that never fades, that no bomb can destroy? I told my friends this. I said, yes, there is. It's God. Let's make God the ideal of our life. God, who at that time was manifesting himself as love. We believed in love. In just a few months, a community of people emerged that was modeled on that of the early Christians, whose only bond was evangelical love, expressed in a complete sharing of spiritual and material goods. It was a contagious way of life which spread quickly beyond the small city of Trent and was welcomed by people all over Italy and Europe. Then, in 1958, it began to go beyond the confines of Europe. One of its highly original characteristics is the fact that from the beginning, Chiara and her movement were called to become witnesses to a completely new communitarian experience, in line with the unity willed by Christ. This spirituality of unity rapidly penetrated the Orthodox, Anglican, Lutheran and Reformed worlds, giving life to what's been described as the ecumenism of the people. The encounter with the major religious traditions of humanity has shown Chiara as an ambassador of peace, of dialogue and of fraternity around the world. But those who have no religious affiliation also find a source of inspiration for their lives in the Foculari spirit. They feel motivated to collaborate with it in defense of universal values such as peace, justice, freedom, and environmental issues. The contribution of Chiara's work and thought to the development of a culture of dialogue and peace has been universally acknowledged.
She's received a variety of honors and international prizes. These include the Templeton Prize for Progress in Religion, the UNESCO Prize for Peace Education, and a large number of honorary citizenships, as well as many honorary doctorates from prestigious universities worldwide. A trip to Brazil in 1991 gave life to the Economy of Communion project, aimed at offering a response to the drama of the terrible poverty of those peoples. Businesses should be set up with managers who are experts and therefore able to make the business work with the greatest efficiency, and the profits are to be put in common. The 800 businesses that adhere to the Economy of Communion project in various nations of the world freely choose to divide their profits into 3 equal parts, giving a third for people with financial difficulties, a third for the formation of people to a culture of giving, and a third for the development of the business itself. The spirituality born from Chiara's charism has an influence in a wide variety of spheres, from politics to pedagogy, from art to medicine, from ecology to communications. Its most recent expression is the Sophia University, which offers an authentic academic experience of formation. Research, study and experience are brought together in the context of a community of life and thought. The number of people adhering to the movement brought about by Chiara is growing all the time. They're people of every culture, social class and walk of life from all over the world. The Foculari Movement currently numbers approximately 2.5 million members and has adherents in 182 nations. They're people who want to live like the early Christians. This model has inspired 35 small towns that have risen up throughout the world, real small-scale models of a society renewed by love. They're an eloquent demonstration that universal fraternity, which is God's plan for humanity, is not a dream. On that day, my God, I will come to you. I will come to you, my God, with my wildest dream, to bring you the world in my arms. Okay, Janab. तो ये my respected participants, that was थोड़ा सा मैंने कहा हमें दूसरे कल्चर्स का भी पता होना चाहिए और इसमें हमारे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन अच्छी चीज़ें हमेशा होती। जी उज़ैर साहब। जी सर। तो सर इसमें सर वीडियो में सर एक ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट का जो सबसे मेन जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग जो सिर्फ ऊपर वालों के लिए नहीं होती, तो इसमें उसकी एग्जांपल इसी तरह बताई है कि वो अपने जो प्रॉफिट्स थे, जो रेवेन्यूज थे, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे। एक बिजनेस ग्रोथ के लिए और एक मतलब लोगों की पेज और इस तरह की चीज़ों में, और एक जो लोग इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थे उनकी हेल्प के लिए। तो सर ये एक ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट का जी ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट का सर एक बहुत अच्छा एक सैंपल उन्होंने पेश किया था। तो जस्ट वांट टू ऐड दिस। बिल्कुल जी, इसका फायदा पता क्या होगा? इसका फायदा उन लोगों को क्या होगा जो सीईओ को, जॉन मंडल को क्या फायदा होगा ऐसा करने से? सोचें जरा। एक तो ज़ाहिर आखिरत के हवाले से है, अगर खुदा पे बिलीव करते हैं तो जो देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें इजाफा करते हैं। तो अपेरेंटली लेट्स सी कि इनको क्या फायदा होता है। ठीक है जी, लेट्स गो बैक टू द केस एंड ट्राई टू सी जॉन मंडल। मैं एक मिनट जरा निकाल लूं उनका, जॉन साहब का। सर उनका फायदा ये होगा कि जब वो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके पास पैसे आएंगे तो फिर वो पे बैक करने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी सॉर्ट में, और उनको अगर कोई लॉयल्टी की बात आएगी तो उस कंपनी के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे, कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और सर हाँ जी बिल्कुल सर, अभी देखते हैं कि जनाब लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। बिल्कुल सही जनाब, पता नहीं ऐसे ऐसे जगहों से फायदा होगा कि हमें पता ही नहीं होगा, और समथिंग विल हैपन। जी जी उज़ैर साहब ने फरमा दिया अप्रोच टू, ये थोड़ा सा मैं केस से मैं स्लाइड नहीं इसकी बनी हुई तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं।
I hope you can see this. जी अच्छा, ये जो साहब थे ना, ये हर चीज ये अनोखी थी इनकी. ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट इस इंतहा पे पहुंची, उनका अप्रोच टू कंपटीशन ही बदल गया. The company seldom participated in competitive bidding. कहते हैं हम competition पे जाएंगे नहीं, because their carefully shaped in-house expertise was designed for the special needs of high-end and complex job. They could not compete on price alone. 80% of their work came as repeat business and referrals. वो काम खुद आता था चल के. ये इन लोगों के पास हम 80% काम खुद चल के आ जाता था. Achieving and maintaining the leading edge in this field required regular and significant reinvestment in people and equipment, plus careful attention to both the kind and the quantity of contracts. ये काम क्यों चलकर आता था? कि काम अच्छा था. काम अच्छा क्यों था? बंदे strong थे. Quality and integrity mattered on every project. If cooperating with a competitor was necessary, Mundell would cooperate. John believed that reputation was built one project at a time. हर काम को, हर project जो है ना, वो बुनियाद बनता है reputation का. By everyone involved with the business, including engineers, consultants, subcontractors, and office staff, सारे important हैं. In regular staff meetings and briefings about individual jobs, he routinely emphasized. क्या कहते थे जनाब? ये देखें जरा. वो क्या emphasize करते थे? आबिस रजा साहब, वासिफ अजीज साहब, having a reputation for excellence lay at the heart of the marketing strategy. Excellence, दर्जा एहसान. या कुरान में एहसान का लफ्ज यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि किसी काम को जो अवेलेबल रिसोर्सेज में जो बेस्ट हो सकता है ना, वो बेस्ट करके दिखाओ. And that because of the size, even one project poorly executed would put the firm's survival at risk. Oh, दो और क्या चीजें थी? A preference for complex projects demanding multidisciplinary solutions and a commitment to employee development. A fourth and overarching part of the strategy reflected an economy of communion. वो जो जिसका ये हिस्सा थे ना, उसका seek opportunities to exercise. ऐसे मौके तलाश करो जिसमें क्या मिले? Giving over having. देने का मौका ज्यादा मिले, मिले कम. EOC का आइडियल क्या था? कि देने वाले बन जाओ. तो वैसे मौके तलाश करते थे जहां पर मौका मिले. Giving over having. Relationship over revenue. Wow. Relationship money as compared to revenue, and generosity in sharing the good. Wow. Mundell and Associates emphasized the ability to find creative solutions for difficult and complex problems, developing new technology, innovating in the application of technology, collecting scientific data. When an individual or a project team at Mundell Associates, अभी सुनिए जरा सर क्या कर रहे हैं. एक मिनट में जरा source slide इसको कर लूं. I hope it's working. Yes. When an individual or a project team at one developed a new data or a new approach, these were to be shared, not only within the company, but with the engineering and scientific community. Share करो यार, छुपा कर मत रखो. Through conference presentations and professional journals, the company's engineers and scientists freely offered what they had learned or developed. Freely offered what they had learned or developed. The company even had patent-worthy innovations. Patent हो सकते थे that they chose to share freely, knowing that it would benefit their competitors. John Saab explained करते हैं, these actions were the result of his belief. The result of his यकीन और अकीदे की बुनियाद पर था that sharing would produce more good for the environment in a more timely way. Besides, John would say the company had innovated before and could do so again. अरे पहले भी हमने innovate किया था, दोबारा फिर कर लेंगे. छुपा छुपा कर न रखे से तेरा आईना है वो आईना. In other words, there was no reason to be afraid of competitors learning Mundell and Associates secrets.
and no need to rely on patents. The firm was on the leading edge in the field. Leading edge in the field, a place that could only be maintained by continual innovation, not protection. Oy, oy, oy. जनाब इसको कोई तर्जमा करेगा, बताएगा व्हाट इज इट? ये क्या क्या रेंज ऑन साहब सर, ये क्या क्या रेंज ऑन साहब? जी जनाब, हम कोल्ड कॉल देते हैं जनाब शाजिब नईम साहब, ये क्या फरमा रहे हैं जनाब? साद असलम साहब सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? ये अभी मैंने पढ़ा है ना, When an individual or a project team at Mundell wala. The firm was on the leading edge in the field, a place that could only be maintained by continual innovation, not protection. ये क्या बता रहे हैं? Sir, because instead of relying on patents and उन patents को protect करने के लिए अपनी energy lawsuits वगैरह में spend करना, they relied more on innovation. जो innovation वो एक दफा कर सकते हैं, वो दोबारा किसी और नई field में भी कर सकते हैं. So instead of putting their energies into protecting what they already had, they instead spent all their energy in discovering whatever. ये कहना आसान है, ये यकीन कहाँ से आ रहा है? ये faith, ये level of faith और energy कहाँ से निकल के आ रही है? सर ये जैसे आपने कहा faith, इनकी जो background है और जो backbone है वो faith है, उस faith से. ये तो MBA के बस की बात ही नहीं है सर, ये तो क्या ख्याल है? Totally agree with you. अरे ये तो ये देखिए, वो कहते हैं हमें डर ही नहीं है, हम क्यों पेटेंट पे डिजाइन करें अल्लाह के बंदो, हालांकि हलाल है पेटेंट बनाने भी शायद. There was no reason to be afraid of competitors learning our way, our secrets. हमें डर ही नहीं है कोई, हमने पहले बनाया था फिर भी बना लेंगे. No need to rely on patents. हम तो वो शायर कहते हैं ना, हम सही और तगय्युर के वली हैं, हम सही, we are the friends of change and effort. हम तो पूरी जिंदगी ये काम करेंगे, और ये जो अच्छा का नियत करेगा खुदा ताला की रहमतें और बरकतें उस पर नाजिल होंगी. और इनोवेशन और क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? अभी मैंने ना कल वो लेगो फिल्म पढ़ा रहा था, सैटरडे को मेरी क्लास थी, तो लेगो जानते हैं ना, लेगो ब्लॉक्स? जी साथ साथ जी सर जानते हमारे हैं. वैसे भाई लेगो ब्लॉक्स जो होते हैं, वो ब्रिक्स बनाई उसने ना, ओनर ने अपने बच्चों को दी, तो बच्चे ने वो टावर सा बनाया तो टावर गिर गया. अब वो सोच रहा था कि यार ये ऐसा कैसे ब्रिक्स बनाऊं जो जुड़ जाएं और गिरे ना. उसके जेब में एक पेंसिल, कान में एक पेंसिल थी, वो पेंसिल लेकर ना वो ऐसे ऐसे मार रहा था और सोच रहा था क्या करूं क्या करूं. तो एक ब्लॉक में ना उसे पेंसिल नीचे मारी ना, तो एक ब्लॉक में ना वो फंस गया और वो ब्लॉक ऊपर उठ गया. उसने कहा हो, अगर पेंसिल की तरह की एक्सटेंशंस होंगी और नीचे होल होगा तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये अल्लाह सुब्हान ताला देने वाले हैं. तो ये जो फेथ है ना, दैट्स अमेजिंग. अभी आगे देखते हैं कि मार्केटिंग के बारे में इनकी क्या राय थी. यानी ये जो फेथ है ना हर चीज को. अभी हमारे पास हमने एक लम्स का गेस्ट स्पीकर बुलाया था गुजरांवाला में, उसने कहा कि सर ये पैसा जो है ना इसका कोई मजहब नहीं होता. हमने IBA के ग्रेजुएट को भी IBA में बुलाया, उसने भी यही कहा पैसे का कोई मजहब नहीं होता और ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें अखलाक मोहब्बत कोई चीज़ नहीं होती. तो मेरा दिल दुख सा गया और मैंने कहा यार लम्स के MBA भी यही पुकार के कह रहा है, IBA का MBA भी यही पुकार कर कह रहा है. और वो कहते हैं कि बॉटम लाइन इम्पोर्टेंट है सर, बॉटम लाइन इखलाक मोहब्बत रहमत मशवरा अगर बॉटम लाइन के लिए है तो ठीक, वरना फारिग. तो ये बिगाड़ देखें कितना आ गया है कि हमें तो ये चाहिए था कि मोहब्बत इसार हमदर्दी मशवरा इम्पोर्टेंट है. अगर वो है तो और प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक. तो हम ये नहीं कह रहे कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है. जैसे मेरे जिस्म के लिए खून इम्पोर्टेंट है, मेरे जिस्म के लिए खून का चलना, जिगर का खून बनाना इम्पोर्टेंट है. लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि डॉक्टर शायद आप क्या काम करते हैं. जी मैं खून बनाता हूँ,
मैं खाना खाता हूँ, खाना खाना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहता जी मैं प्रोफेसर हूँ, दिस इज माई जॉब, और खून बनाना मेरी ज़रूरत है और खाना खाना मेरी ज़रूरत है। इसी तरह हम ये कहेंगे कि अच्छा इखलाक और मोहब्बत और मशवरा और कंट्रीब्यूशन ये मेरा मकसद है, और उस कारोबार से पैसा कमाना मेरी ज़रूरत है। ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये बारीक सी डिस्टिंक्शन है, और ये इसका ताल्लुक फेथ के साथ है, इसका बिलीफ के साथ ताल्लुक है। अब वो कहते थे कि हमारी मार्केटिंग किस चीज़ पे होती है। The company pursued a circular marketing strategy with reputation and actual performance, excellence in complex and difficult projects, technical capability, innovative applications, professionalism, work ethics, and experience. ये थी हमारी बुनियाद। कभी कभी कॉन्फ्रेंसेस पे बात कर देना, टेक्निकल कमेटीज के मेंबर बन जाते थे जॉन साहब, उनके साथी। He was especially eager to serve on local, regional, and state committees with influence on environmental policies. तो उनकी मार्केटिंग यहाँ से हो रही है। Professionals in the businesses were encouraged to follow his example. वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग क्या की उन्होंने, वेबसाइट, या उसने ना एक प्रोग्राम किया था, स्पॉन्सर किया था रेडियो के ऊपर। That's it. Through the years, John had worked carefully to craft the language. Mundell and उसने अपनी एक लैंग्वेज बनाई, और जिम बेकर जो उसका साथी था, उनका जो मिशन क्या था, उनका मिशन देखेंगे। मिशन क्या है? मिशन स्टेटमेंट: We are committed to environmental justice, to protection and आवाज किसकी आ रही प्यारे भाइयों? फैजुल्ला साहब, मैं जरा म्यूट कर दूं उनको। We are committed to environmental justice, to protection and preservation of natural resources, and as a result of membership of the economy of communion, हम चूंकि उस कैथोलिक के साथ अटैच हैं, तो हम क्या करेंगे? To share profits with those in need. ये मिशन स्टेटमेंट में आ गया। We are a small, innovative, flexible engineering business, a skilled professional team with high standards. We care about people and we live our values. देखें जनाब, मुझे दिखाएं पाकिस्तानी कंपनियों की ऐसी मिशन स्टेटमेंट। We care about people and we live our values. हाँ जी जनाब, we are small, to sharing profit with those in need. कमाल कर दिए जनाब। क्या हाल है उसामा जमील साहब? तो पाकिस्तानी कंपनी अगर दिखाएं हमें भी तलाश करके, अगर इस कोर्स में अगर आप तलाश करें तो तलाश करो भाई। जुनेद भूरी साहब। बिल्कुल सर। सना हसन साहब, ऐसा होता है जनाब POL में? नहीं सर, यहाँ कॉमनली तो ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, माशाल्लाह। आगे को थोड़ा सा और रह गया, फिर हम देखते हैं क्या करना है अभी। Inside the company, the management side. Okay. वो कहते हैं treating people with respect, recognizing each transaction. Treating people with respect, recognizing each transaction and each person as important. These were core values. Business was regarded as a place to practice patience. Business was regarded as a place to practice patience, trust, and positive regard for the other, not just within the company, but with clients, suppliers, and the community as well. But measuring performance on these variables, individual or business, was another question altogether. Hiring कैसे करते थे ये? ऐसा बंदा हायरिंग कैसे करेगा? John wanted employees who shared his vision to improve the earth and had the mix of knowledge and skills to make them happen. मेरी टीम में वो बंदा आए जो इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। मेरी टीम में वो आए जो इसके पास उस तरह का नॉलेज और स्किल्स हो, वो आ जाए। Academic achievement, advanced degrees, specialized training, and excellent quantitative and reasoning skills were central, ठीक है, important थे, to the consulting role. Oral and written communication skills are essential to effective interaction with clients. Senior staff and team leaders needed substantial geographic and regulatory experience, ये भी चाहिए था.
plus experience in project management. Team skills were a must. John was also on the lookout for individuals who could interact authentically. ऐसे जो मुखलिस लोग चाहिए जो क्लाइंट्स के साथ बात कर सकें as the face and spirit of Mundell Associates and its EOC. ऐसे लोग हों जो दिलो जान से अपने चेहरे से अपनी रूह से वो जो इकोनॉमी ऑफ कम्युनियन की जो वैल्यूज थी ना उसका मजहर बन सकें उसके लिए वो तंग नजर भी नहीं था. Neither prior knowledge of EOC, अगर आप कैथोलिक के अकीदों से को नहीं जानते मुसलमान हैं, even then nor an expressed interest in EOC or Foculari or nor any particular faith affiliation was expected. अगर आप मुसलमान हैं तो भी अगर आप इस दुनिया और इंसानों को बेहतर करना चाहते हैं तो भी आप वेलकम हैं. The hiring process was usually long and involved. हायरिंग प्रोसेस ऐसा लोगों का लंबा होता है 2, 4, 6 महीने थोड़े से प्रोजेक्ट का काम करवा दिया. Requiring applicants to complete a pre-interview questionnaire and scheduling interviews. कई लोगों से इंटरव्यू होता था और उनको छोटे छोटे काम देकर अभी देखना ये क्या पूछ रहे हैं. We ask you to reflect and respond briefly. List 3 things. List 3 things regarding your work that you are the most passionate about. आपका पैशन कहाँ है? 3. Give a specific example of where each of your 3 passions had made a difference on the job. उस पैशन ने जॉब में क्या डिफरेंट करवाया? Please, each example briefly describe the situation, the actions you took. As motivation is an internal force. आप बताएं कि how is Mundell Associates can do to help you to motivate you. हम कैसे आपकी हेल्प करें? यानी उल्टा पूछ रहे हैं कि हम कैसे हेल्प करें, बताओ, हमें बताओ यार. What are the top 3 job results you should be expected to produce? आपके ख्याल में आपको क्या करना होगा? What are your reasons for considering Mundell and Associates? अभी देखना ये इंटरव्यू की क्वालिटी देख ले जरा. और फिर मुख्तलिफ लोग मिलते थे, जॉइंट रैंकिंग करते थे, so on and so forth. ट्रेनिंग क्या है? अपने एम्प्लॉइज के साथ. John did not push the EOC idea on new employees. Prospective hires were told about the company's EOC connection as a way of explaining its expectations. अगर आप मुसलमान भी हैं ना तो आप अगर हमारे EOC के कैथोलिक expectations क्या हैं आप उसको चेक कर लें. John called this the message of EOC. It was in no way a thorough description. He believed it also happened to support his own philosophy that a CEO in any business must walk the walk, modeling the behavior expected from employees rather than just talking about it or codifying it in policies. Occasionally, John used biblical and Christian language in these discussions. कभी-कभी वो ये भी यूज कर लेता था. Talk of generosity in giving to the poor or living, gospel values in interaction with suppliers or clients, but he seldom mentioned EOC. वो जेनेरिक बातें बाइबल और क्रिश्चियन के यूज कर लेता था. अपना खास जो था ना EOC का कनेक्शन उस पर शायद ही कभी बात की हो. ठीक है जी, बहुत शायद ही कम. तो ये भी एक बहुत खूबसूरत. कॉम्पोजिशन के बारे में क्या नुक्ता था? In John's view, generating profits to be shared was of no use if it came at the expense of fair pay. कहते हैं fair pay होनी चाहिए कम से कम. That a business should pay fair wages and benefits to both employees and owners. At a basic level, this meant meeting or exceeding competitive salaries and benefits. The company offered tuition reimbursement and bonuses for performance. John believed that education and skill development paid dividends for the company by increasing its capability. Take the performance review. In addition to covering the typical technical performance, annual reviews for engineers and scientists also covered leadership, communication, conflict. ये चेक करते थे कि इसमें क्या बेहतरी आई है. तो ये जरा देखें, जरा मैं आपको इसका टेबल दिखाता हूँ. वो I think we should
अच्छा, बिजनेस रिलेशनशिप्स के बारे में इनकी क्या राय थी कि creating unity or a communion in the language of ESC started with doing good work, with good science, good engineering, and with technical competence. Authenticity, khalis, honesty, and transparency were equally important. Ye dekhiye, in business negotiations, one obviously could not make irrational decisions. यानी मुनाफा तो हम लेंगे, मतलब irrational नहीं करेंगे, but it was possible to decide to leave something on the table. ये मुमकिन था कि कुछ अपना हक छोड़ दो, किसी को जितवा दो, प्रॉफिट कम कर दो. Maximizing dollars was not critical every time. More than once the company had acted on this philosophy and been rewarded, but rewards were not really the point. Holding to principles of honesty and transparency had made it easy to refuse requests for political contributions. In John Mundell's experience, honest officials sought out the company for its reputation. तो सरकारी लोग भी ना कहते थे यार ये लोग सही हैं, ये लोग सही हैं. तो ये चीजें सारी चेक की जा रही हैं आपकी परफॉर्मेंस में चेक की जा रही हैं मेरे साथियों. टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? What have you done to improve your ability to do your job the past year? आपने आपको क्या improve किया? Mundell Associates क्या कर सकता था? What are your career aspirations over the next 3 years? And how can Mundell Associate assist you? Write out your top 3 case histories for the past year. Update your resume and attach them. देखिए जनाब, माशाल्लाह, ये चेक कर रहे हैं टीम वर्क. ये चेक करो 5-6 साथी मिलकर बताओ कि नवीद गुडेल साहब जो हैं, does he work well with others in project teams? Voluntarily shares talents and ideas? Communicates consistently? Quality of work के हवाले से पूछो. Quality of work के हवाले से पूछो, innovation, creativity के हवाले से पूछो, provides creative solutions to existing barriers and problems, resourceful to overcome problematic situations. ये resourceful है कि नहीं है? ये मांगता रहता है हर वक्त, खुद ही ideas लेकर आ जाता है. Regularly reads current literature and is technically up to date. Technical knowledge का बारे में. ये फिर ये इस कंपनी का अदाएं बदल गई, इसका अंदाज, and so on and so forth. तो ये जनाब ये आप देख लेते हैं, कोई हाईलाइट किया हुआ है. ओके, आगे देख लेते हैं. Inside the company, in the words of the employees. Meryl Tabe, office manager and HR specialist, had an MBA and plenty of systems experience when he joined the company in 2006. His first big task involved analyzing the adequacy of company databases, then solving problems in the accounting and billing systems. But MBA training had also sharpened his appreciation for overall environment and culture. From the start, he claimed to sense something unique about the company, and he believed many clients sensed it too. While he was no expert on the EOC, he credited, usko economy of communion ka nahi pata tha. He credited that the connection for much of what made Mundell and Associates different. Meryl Saab remember karte hain what John had said about EOC before he was hired, and this had prompted him to do some EOC research. Curiosity awakened, उसने research की तो तजस्सुस में इजाफा हुआ. He listened closely to John's casual references to other EOC companies and his reports on happenings at the EOC conferences. If John had invited Meryl to go to Italy, he would have gone. He made a point of reading the Foculari magazine that came into the office. तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना ये मुताबिक होते चले गए, और ये इनके कह रहे हैं कि people were expected to do high quality work and give 100% to the job. The atmosphere was positive. The last minute rush of getting out a consulting report sometimes caused tensions. ये कुछ चीजें हैं बहरहाल. वो कह रहे हैं, if my only goal had been to found and manage a good environmental consulting business, John thought, but there had always something more, a desire to bring EOC values into the world through the business. Participation in the EOC experiment was not just about building companies.
creating wealth and improving life. It was also and perhaps primarily about creating a business culture, as a business culture that could be a sign and force for good. As a new entrepreneur, John had taken seriously Foculari wisdom that said the key to building unity was to focus on first living and managing in a way that attracted people rather than pushing the. कहते थे आप अमल करके दिखाओ, अमल करके, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. ठीक है जी, तो ये एक केस है जो अपने अख्ताम को पहुंचा. आई विश के पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं हमारे सामने, उनके केसेस भी इंशाल्लाह आएंगे. गनी ग्लास भी कोशिश कर रहा है इस मॉडल के ऊपर, और कुछ कमियां भी हैं, और वी आर ऑल स्ट्रगलिंग. तो आई विल, तो जनाब क्या ख्याल है, को 15 मिनट ब्रेक कर लें और फिर देन वी कैन फिनिश इन 45-50 मिनट्स. एक और रीडिंग रह जाएगी. ये केस यस सर, आई थिंक ब्रेक कर लें. यस सर. थैंक यू सर. 3:45 पर आ जाएं. ठीक है जी, इट इज फाइन. 25 मिनट की ब्रेक कर लें, फिर हम 4:30 के करीब कोशिश करेंगे खत्म करने. श्योर सर. Sure, sir. अस्सलाम. Thank you. Sure, sir. Thank you, sir. Sure. He's an MIT graduate, did his undergrad from MIT, PhD from Stanford, और ये मशहूर जगहों से पढ़ कर आए, और जब ये 40-45 साल के हुए तो उनको ये पता चला कि हमारे साथ हाथ हो गया है. और हाथ ये हुआ है कि हमें ये कहा गया कि सोशल साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन उनको ये पता चला एट द एज ऑफ 45 कि सोशल साइंस तो साइंस ही नहीं है. तो आज का हम ये देखेंगे कि हमारे साथ The origins of Western social science. ये पिछले 15 सालों में बहुत गलगला हुआ लम्स में और IBA में कि सोशल साइंस पढ़ानी चाहिए, और वो जनाब कव्वा चला हंस की चाल, वो अपनी चाल भी भूल गया. वो हम सोशल साइंस के चक्कर में कि सोशल साइंस कोई साइंस है, इसको पढ़ाना शुरू किया, नए डिपार्टमेंट बने, नए डीन बने, नए लोग आए, तो वो पता चला कि ये सोशल साइंस के लोग काफ़ी डिफरेंट होते हैं. ये कानों में बालियाँ भी डाल देंगे कई दफ़ा, और बहुत डिफरेंट हरकत करते हैं. तो इसको ये लम्स में भी हमने देखा था, और यहाँ पर भी हमें देखने का मौका मिला. ये अचानक दाढ़ी रखेंगे, दरमियान से अचानक शेव हो जाएगी. तो वो हमारी बास फैकल्टी कहने लगी, यार ये बड़ी वैरायटी है शक्लों में. तो दे हैव द राइट टू डू व्हाटएवर दे लाइक, उनको राइट है, इसमें कोई हम उनका मजाक नहीं करेंगे. We respect them to how they behave, how what they wear. लेकिन उसकी जो ओरिजिन जानने के लिए इसका अल्टरनेटिव मैनेजमेंट पर बड़ा गहरा इम्पैक्ट है एक्चुअली. तो मैं चूंकि 10-15 सालों से डॉक्टर असद जमान को सीख रहा हूँ इनसे, और ये कराची ग्रामर से पढ़े, कहते थे मैं $1000 फीस होती थी मेरी, और मैं एथीस्ट हो गया था, और मैं खुदा को नहीं मानता था. ये हमें कराची अमेरिकन ग्रामर स्कूल ने सिखाया था कि चीज़ें रैंडम होती हैं, खुद ब खुद बन जाती हैं, बाई चांस दुनिया में चीज़ें होती हैं, इस कायनात का कोई खुदा नहीं है. फिर मैं MIT चला गया, 18 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, 21-22 साल की उम्र में अंडरग्रेड कर लिया, और टॉप नॉच नंबर से ग्रेजुएट किया, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में एक इमाम की हैसियत इख्तियार की. वहाँ से इनको स्कॉलरशिप मिला, मास्टर्स लीडिंग टू PhD, स्टैनफोर्ड चले गए, नोबेल प्राइज विनर से उन्होंने तालीम मुकम्मल की, और उन्हीं की कहने लगे कि हमारी ज़िंदगी में ना कोई इस्लाम था, ना हमारी ज़िंदगी में कोई खुदा था. और फिर पता नहीं 10 साल ऐसे गुजर गए, लेकिन ज़िंदगी वीरान थी, बेचैन थी. एक दिन नहीं किसी ने कुरान पढ़ने को दिया, तो हमने शक के साथ इसको पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिस पर मैंने गौर किया, और उस गौर करने के नतीजे में मैं रिफ्लेक्ट किया, और मैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में और सोशल साइंस के बारे में जो मेरे तसव्वुरात थे, मैंने अपने नोबेल प्राइज़ विनर प्रोफेसर से पूछा कि यार इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें गलत हैं मुझे लग रहा है. तो उसने कहा नहीं, इस पर क्वेश्चन मत करो, इस पर ना इसको वैसे ही बिलीव कर लो, वरना तुम्हें मसला होगा. तो कहने लगे कि मैं हैरान रह गया
یہی آرگومنٹ اور یہی لاجک ہمیں مذہبی لوگ کہتے تھے کہ فیتھ اندھا ہوتا ہے تو آپ بلیو کر لو. تو یہ پڑھا لکھا پی ایچ ڈی نوبل پرائز ونر بھی یہی کہہ رہا ہے اپنے عقیدے کے بارے میں. وہاں سے تجسس اور پڑھا اور بڑھا اور قرآن پڑھا اور اکنامکس پڑھی اور پھر مجھے تضادات کھلتے چلے گئے اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ اکنامکس کے بہت ساری چیزیں وہ غلط ہیں جس کو عقیدہ بنا کر سوشل سائنس اور اکنامکس اور مارکیٹنگ میں ڈال دی گئی. جن کی تو اس کی میرا جستجو کا سفر شروع ہوا. یہ ایم آئی ٹی میں بھی پڑھایا, اسٹینفرڈ میں پڑھایا اور امریکہ کی پین اسٹیٹ یونیورسٹی میں غالباً پڑھایا, ترکی میں پڑھایا, لمس کے اندر یہ بڑا عرصہ پروفیسر رہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ڈین بن گئے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر رہے اور یہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت اہم پوزیشنز پر رہے. ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے اس وقت کہ ڈسائفر کرنا کہ ویسٹرن سوشل سائنس کیا ہے, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوشل سائنس سائنس نہیں ہے. یہ ایک فارس ہے, یہ ایک جھوٹ ہے, یہ ایک دھوکہ ہے. یہ سائنس نہیں ہے, یہ ویسے ایک نالج ہے, بس ایک نالج سٹریم ہے. جو سائنس کس کو کہتے ہیں؟ سائنس اس چیز کو کہتے ہیں جو ہر جگہ پر گریوٹی, جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد میں گریوٹی ہے, افریقہ میں چلے جائے وہاں بھی گریوٹی ہے. ایف از اکول ٹو ایم اے کا پرنسپل پوری دنیا میں چلے گا. بوئنسی کے لاز ہر جگہ چلیں گے. وہ لاز ان کو یونیورسل حیثیت اختیار ہو جائے ان کو سائنس کہتے ہیں. ان کو آبزرو کیا جائے, کیا جا سکتا ہو, ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہو, ریپیٹ کیا جا سکتا ہو. تو یہاں سے ان کو معلوم ہوا کہ سوشل سائنس کے جو لاز ہیں وہ یونیورسل نہیں ہیں, وہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو لا ہے یہ انفلوئنس ہو جاتا ہے. گریوٹی کے لا کو کوئی پریزیڈنٹ, رشین پریزیڈنٹ, امریکن پریزیڈنٹ چینج نہیں کر سکتا. سوشل سائنس کے جتنے بھی لاز ہیں ان کو کوئی بھی چینج کر سکتا ہے. صدر, حکومت, گورنمنٹ, فوجیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ترتیب کو, کمپوزیشن کو انفلوئنس کر سکتا ہے. ایف بی آر چینج کر سکتا ہے, کسٹمز کی ڈیوٹیاں بڑھ دیں, کم کر دیں, اجازت دے دیں, کم کر دیں. وی کین انفلوئنس دیٹ. تو وہ سائنس کیسے بن گئی؟ یہ سوشل سائنس نے اس کو سائنس کیوں بنا دیا؟ بھائی سائنس تو نہیں ہے, یہ تو ایک کنجیکچرل علم ہے, اندازے کا علم ہے. اس کو اندازے کا علم ہی رہنے دو نا, اس کو سائنس مت بناؤ. اس کو سائنس بنایا, اس کو امپورٹنٹ بنایا, اس کو وہی سے اوپر لے گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی دھوکہ کھا لیا ہے. انہوں نے سوشل سائنس اور فزیکل سائنس کے فرق کو نہیں سمجھ سکے. جو فزیکل سائنس ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, بایولوجی, یہ فزیکل سائنس ہے. الیکٹریکل, نیوٹن, کرشافس لا, اوہمز لا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہیں, یہ کسی حد تک ڈٹرمنسٹک ہیں. ڈٹرمنسٹک مینس یہ ان کا ایک جواب نکل آئے گا اور یہ ہر جگہ ایسے ہی ہوگی. لیکن جو سوشل سائنس ہے نا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, اکنامکس, سوشیولوجی, اینتھروپولوجی, انسانوں کے بیہیویئرس, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کو فارمولا بنا کر ہم جواب وی ایف از اکول ٹو وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی پریڈکٹ کر سکتے, جواب معلوم کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ, اس لیے اکانومسٹ کے جتنے بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں 99.9% انشاءاللہ غلط ہوتی ہے, بہت دور کے انداز سے ہوتے ہیں. اور ریگریشن ایکویشنز جو ہیں یہ چینجز ان کووڈ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتی, اور ان کے ماڈلز جو ہیں وہ بہت بعید از ریالٹی ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے دونوں کو ایک سمجھ لیا, ان کو بھی اسی طرح کا درجہ دے دیا گیا. اس کا امپیکٹ ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا نقصان کیا ہے. تو وہ ہم یہ لیٹس سی اینڈ فار the next 1 hour we'll be trying to cover that inshallah. The prestige of the Western social physical science has led Muslims to give Western social science the same respect. تو سوشل سائنس ہے کیا ایکچولی؟ سماجی علوم کیا ہیں؟ اس کو سماجی علوم کہنا چاہیے, سماجی سائنس نہیں کہنا چاہیے. سماجی علوم کیا ہیں؟ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ نے جو بغاوت کی ہے نا خدا کے خلاف, یورپ نے, ویسٹرن ڈینائل آف گاڈ, اسپرچویلٹی اینڈ مورالٹی, تینوں چیزوں سے بغاوت کر دی. نہ ہم روحانیت پہ میں یقین رکھتے ہیں, نہ اخلاقیت پہ, نہ خدا. اس کے نتیجے میں
سماجی علوم وجود میں آئے. ابھی ہم دیکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اوکے, یہاں سے چلتے ہیں. وہ مثال کے طور پر at the international level the doctrine of preventive military action. امریکہ کیا ٹھہرے گا, امریکہ کا جناب عقیدہ کیا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی کا کرنل صاحب آئے ہوئے سر, یو ایس آرمی کا پریزیڈنٹ یو ایس کا عقیدہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل لیول the doctrine of preventive military action. کہ ہمارے ملک کے خلاف کوئی سوچے گا بھی نا اگر افغانستان کے پہاڑوں میں یا افریقہ کے جنگلوں میں, تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تھینک یو. ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری فوجیں ہمارے بندے جائیں اس کو مار دیں جا کر. The doctrine of preventive military action and the US violations of sovereignty under the military doctrine that you can only claim sovereignty if you enforce it, اس کو کیا کہیں گے؟ This represents a return to the law of the jungle. عائشہ بشیر, یہ جنگل کا قانون ہے. سوشل سائنس نے جنگل کے قانون کو پروموٹ کر دیا. ریسرچ آن سائنٹیفک میتھڈز آف ٹارچر. کلائنٹ صاحب یہ کہتے ہیں 2007 میں کہ ٹارچر کے اوپر ریسرچ کریں اور یہ بتائیں کہ واٹ امپیکٹ آف ماڈرنٹی اینڈ mass violence, massacres and genocides and general breakdown of human values. Society is shaped by families, where children learn what it means to be human and part of society. The breakdown of this fundamental unit of society has been documented in many places. Consequences of this breakdown are apparent in the Josephson Institute survey, which shows that more than 30% of the 30,000 USA high school students, 30% of USA کے بچے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی, اسٹور سے, پیرنٹس اور فرینڈ سے. According to the Center for Disease, USA has the highest teen pregnancy rate in the world. Highest teen pregnancy rate. The vast majorities of approximately million such pregnancies. Thank you. جی جناب, کون بول رہے ہیں؟ راہم صاحب میوٹ کر لیں. Okay. The vast majority of approximately million such pregnancies per year are unintended and have a devastating social, economic and health consequences. تو یہ سر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سوشل سائنس کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ایکچولی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کیسے ہوئی اور اس کا امپیکٹ دیکھیں گے, پھر سوال بھی لے لیں گے. یہ آرٹیکل بھی آپ کو کورس پیک میں حصہ ہے, ذرا مشکل آرٹیکل ہے, انگلش تھوڑی سی ایڈوانسڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل سماجی علوم کو سائنس بنانے کا آغاز یہ 1580 90 1600 میں ہوا. In the 16th century, European and Muslims thinkings were alike. یورپین اور مسلم ایک ہی سوچ تھی انسانی چیزوں کے بارے میں. Historical developments in the West led to the emergence of secular thought. کچھ ایسے تاریخی واقعات ہوئے جس سے سیکولرزم عام ہوا, جس نے ریلیجن کو سائڈ پہ کر دیا. ہم غور دیکھیں گے کہ وہ کون سے واقعات پیش آئے. A major problem with the understanding of this development is that vast majority of European descriptions of this history are fundamentally wrong and at variance with the facts. ہمیں جو ہے نا جو یورپین تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے اور حقیقت سے دور ہے, اس لیے ہمیں صحیح چیز کا پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ سیکولرزم تھاٹ کیسے وجود میں آیا. However, discovering this is not easy because the relevant material is not easily accessible and is not referenced or discussed in the mainstream texts. The main goal of this section is to show that social science emerged in Europe as a replacement for religion. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب it attempts to answer questions about man and society. This is in direct opposition to Islam in many areas. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 1500 کے زمانے کی کتابیں پڑھیں, 1550 میں اگر سماجی علوم کی کتابیں پڑھیں یورپ میں about burning socialist issues, قیمتیں بڑھ گئیں, انٹرسٹ, لینڈ, زمینوں کو کیسے ملکیت ہو, we find a constant appeal to Christian values. 1500 کی کتاب اور اخباریں اٹھائیں تو اس میں کرسچن ویلیوز اور اخلاقیات کا تذکرہ ہے. 17ویں صدی 1650 کی کتابیں اخباریں اٹھا کر بیٹھیں
اس میں کیا چیزیں economic issues are being discussed in terms of profit and loss and appeals to religion rare or absent. تو یہ جو 1500 سے 1600 کا جو ٹائم ہے نا 1550 سے 1650 کا جو 100 سال ہے that is very very instrumental to understand کہ ان 100 سالوں میں کیا ہوا اور ان سالوں میں کیا ہوا. ان سالوں میں یہ ہوا میرے پیارے عزیزو the loss of faith in the West occurred. faith lose کر گئے اور faith کیا lose کر گئے وہ ہوا یہ تھا کہ وہاں کے جو چرچ تھے نا جی وہ جیسے پہلے بتایا تھا کہ جو چرچ تھے کیتھولک چرچ یا ایلیٹ کلاس کے ہاتھ لگ گیا. ایلیٹ کلاس نے چرچ کو اپنے چودراہٹ کا ذریعہ بنایا پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا. یہ جو چرچ تھا میں ابھی لیکچر موڈ میں چلا گیا اسکرین سے دیکھ کر نہیں پڑھوں گا. یہ جو چرچ جو تھے یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہاں پہ اکنامک ریسورسز بنا لیے. انہوں نے اپنے واٹر کینالز بہت تھیں وہاں پر پنچکیاں نہ لگوانی لوگوں کو معافیاں دینے لگے تو یہ گینگسٹرز بن گئے. اور پھر انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں بھی رکھ لیں. تو یورپ کے اندر بے شمار درجنوں چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھیں ان کے اندر بادشاہ تھے تو چرچ بھی ان کے مقابلے میں آ گئے. کس ریاستوں پر قبضہ کر لیا فائنینشیل انڈیپینڈنس لے لی مرسنریز کرائے کے فوجیوں کو ہائر کر لیا. تو اس طرح they were living extremely luxuriously legitimizing bastard progeny selling pardons sporting lavish lifestyles. تو یہاں پر یہ جو چرچ تھا نا اس کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹ اٹھے اور ان کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں. اور اسی زمانے میں سائنس جو اسپین کے اندر مسلمان سائنس اور کریٹو تھنکنگ کی چیزیں چھوڑ گئے تھے جب مسلمانوں کا زوال آیا وہ کتابیں اور وہ علم و حکمت ان کے ہاتھ لگا وہاں سے ان کے سوچنے کا انداز بدلا اور فزکس کیمسٹری الجبرا کے اندر تحقیق ہوئی اور وہاں سے انہوں نے ڈسکوریز کرنی شروع کی. اور وہ بہت ساری ڈسکوریز جو تھیں جن کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی تھی اس میں سے مسلمانوں کا نام ہٹا کر انہوں نے برٹش امریکن نام لگا کر گوروں کا نام لگا کر اس کی بنیاد رکھی اور وہاں سے اس کو انلائٹنمنٹ کا دور شروع ہو گیا جس کو وہ انلائٹنمنٹ کہتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ جو چرچ تھا وہ اس کے خلاف تھا کیونکہ سائنسدان یہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے میں ایک منٹ سلائڈ کھولوں جسٹ اے منٹ. سائنسدان یہ کہتے تھے کہ دنیا گول ہے پادری کہتے تھے دنیا فلیٹ ہے. تو اگر جناب یہاں سے کرنل صاحب چلیں گے چلتے چلتے ایک جگہ آئے گی نیچے گر جائیں گے کیونکہ دنیا تو فلیٹ ہے. گیلیلیو نے کہا کہ دنیا گول ہے پادری یہ کہتے تھے دنیا ساکن ہے سورج اس کے گرد گھومتا ہے. گیلیلیو نے سائنسدانوں نے کہا کہ دنیا بھی گھومتی ہے سورج بھی گھومتا ہے دنیا سورج کے ارد گرد گھومتی ہے. تو اب یہ بائبل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا فلیٹ ہے آپ گرو گے چلتے جاؤ گے تو گر جاؤ گے. تو بہت ساری سائنٹیفک آبزرویشنز بائبل کی تشریحات کے خلاف تھیں وہ انسانی کاوش تھی یہ سائنٹیفک آبزرویشن کے نتیجے میں ایک سچائی ظاہر ہو رہی تھی. جب اس سچائی کا اور جھوٹ سے مقابلہ ہوا تو پادری اس کو ٹھہر نہ سکے. پادریوں نے اپنی طاقت اور زور سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. گیلیلیو کو مار دیا گیا and so on and so forth. تو وہاں پر پھر کیا ہوا پادری اپیرنٹلی جیت گئے لیکن وہ سوال جوانوں کے اندر رہ گئے اور جوانوں کے اندر سوال آ جائیں تو بغاوت اٹھتی ہے. جب بغاوت اٹھی تو جناب اس بغاوت میں وہ چرچ کا ادارہ ٹوٹ پھوٹ گیا اور وہ سائنسدان غالب آ گئے اور پھر وہاں پر the intolerance of these sects and battles and carnage or oppression and injustice all carried out in the name of Christianity convinced Europeans that religion could not serve as a basis for ordering the society. ان کا نہیں یار یہ کیتھولک کچھ کہتے ہیں پروٹسٹنٹ کچھ کہتے ہیں فلانا کچھ کہتے ہیں وہ فرقہ یہ کہتا ہے تو اس طرح کرو سارے فرقوں پر بین کر. سوشل ہارمونی لانی ہے نا تو اس کے لیے کوئی سائنٹیفک علوم چاہیے جیسے فزکس کیمسٹری بایولوجی ایک یونیک یونیورسل چیز ہے نا تو اس طرح کرو ہمیں کنفلکٹنگ ریلیجیس پرنسپل سے جان چھڑا کرنا ہمیں ایک ایسی چیزیں لے کر آؤ جہاں پر کامن سوشل پرنسپل بنا لیے جائیں. تو سوشل سائنس کیا ہے
Social science definition is the name of the efforts to provide answers to fundamental questions which emerged as a result of abandonment of religion. अस्तर ज़मान साहब कहते हैं जब यूरोप ने फैसला किया कि हम मजहब को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो उसके बाद जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब साइंस से कैसे ले? उनके कौन से सवाल है? ये सवाल है, ये सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए था. Science, social science is the name of pattern efforts of Western efforts to answer these fundamental questions without invoking God. ये कायनात कैसे बनी, हम कैसे बने, हमें एक दूसरे से कैसे पेश आना चाहिए, अखलाकियात की बुनियाद क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी, मैं अखलाक, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी, सदका में क्यों दूं, मैं मुल्क के लिए क्यों अच्छा सोचूं, मुआशरे के लिए मैं सुर्ख बत्ती पर क्यों रुकूं, मैं क्यों करूं, हाउ शुड बी ऑर्गेनाइज सोसाइटी में, सोसाइटी को अपने महल्ले, इलाका, मुल्क को कैसे ऑर्गेनाइज करें, काउंसलर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम कौन हो, कैसे किया जाए, नॉलेज क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज किसको कहेंगे, हम सही और गलत नॉलेज किसको कहेंगे. ये चंद सवाल, इन सब सवालों के जवाब उसामा सरवर साहब मजहब देता था. मजहब ये कहता था इस कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है. क्रिश्चियनिटी बाइबल में भी यही कहती थी कि खुदा ताला ने 6 दिनों में ज़मीन को बनाया, कायनात को बनाया, और अल्लाह के हुक्म से इंसान को बनाया गया और उसमें रूह डाल दी गई. और हमें जब एक दूसरे से पेश आना है तो खुदाई और आफाकी उसूलों का ख्याल रखना है. अरे तुम अपने माँ बाप से उसने सलूक के साथ पेश आओ. वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, तुम अपने पेरेंट्स के साथ एहसान से पेश आना, उनके आगे उफ भी ना करना. ऊफू बिलअहदी इन्नल अहद कान मसूला, जब तुम प्रॉमिस कर लिया करो तो अपने वादे को पूरा करना, क्योंकि तुम्हारे वादों के बारे में खुदा पूछेगा. हाँ जी, वो क्या था, वलाफीना अन्नास, अरे लोगों को माफ कर दो, और अरे लोगों और अकड़ कर मत चलो, और शुक्र का एहतराम, शुक्र करना, छोटों से मोहब्बत करो. तो ये चीजें रिलीजन से आ रही. सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करो, अमरहुम शूरा बैनहुम, जब भी तुम आपस में काम करो तो मशवरा कर लिया करो, मशवरे की शक्लें बनाओ, मशवरे के इंस्टीट्यूशंस बनाओ, लोगों को इम्पोर्टेंस दो. और तुम में से कोई बेहतर नहीं है, बेहतर वो है जो तकवा वाला है. नॉलेज क्या है, वो नॉलेज के बारे में मजहब ये कहता था कि हासिल हकीकी नॉलेज वही का इल्म है, बाकी सारे इल्म जन्नी इल्म है. जन्नी मीन्स प्रोबेबिलिस्टिक इल्म है, वो वक्त के साथ चीज़ों के साथ बदल जाते हैं. असल इल्म वही का इल्म, असल इल्म प्रोफेटिक इल्म, बाकी मुशाहिदे का इल्म, ऑब्जर्वेशन का इल्म, एक्सपेरिमेंट का इल्म एक जन्नी इल्म है, प्रोबेबिलिस्टिक है. और इसमें से कुछ इल्म जिसको खुदा ताला ने इशारा किया वो भी ये लाइक सूरज का निकलना और एग्रीकल्चर का, पौधों का बाहर निकलना, इसका इल्म, ये भी जब खुदा की नज़र से देखेंगे तो ये भी डिटर्मिनिस्टिक इल्म बन जाता है. जो साइंस के जो फैक्ट्स हैं जब उसको खुदा की नज़र से देखेंगे, फिजिक्स का लॉ, ओहम का लॉ, वो तो खुदा का इल्म है. V इज इक्वल टू IR का जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है. इंसानों ने क्या कमाल किया, उन्होंने तो ऑब्जर्व किया है, उसको ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब कर दिया. VF इज इक्वल टू हाफ AIT, ये तो अल्लाह ताला ने इसको बनाया हुआ था, हमने इसको डिस्कवर किया, देखा, उसको लिख दिया, हमने वो लॉ थोड़ा बनाया है. तो इल्म की बुनियाद वही है, और इल्म की बुनियाद सच्चाई है, और बाकी रिलेटिव इल्म है, वो फैसला करेगा सही क्या है और गलत क्या है. एक मिनट दे दीजिए मुझे, मैंने जिस थोड़ा सा मैसेज देना है.
अच्छा ओके जनाब, तो मेरे प्यारे अजीजों, इन 5 सवालों के जवाब जनाब ये कहाँ से मिलेंगे? इन 5 सवालों के जवाब साइंटिस्ट ने कहा कि हम साइंस से देखेंगे, और ये साइंस वाले भाई आप देखेंगे क्या किए लोगों ने हमारे साथ, इन्होंने हमारे साथ हाथ कर दिया। आगे चलते हैं, ये चीजें थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। ओके, origins of the universe. Social origin, secular thinking must attribute the creation of the universe to a random accident. सोशल साइंस वालों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था, एक रैंडम इवेंट हुआ था। अहमद कुरैशी साहब, एक रैंडम इवेंट हुआ था, अचानक जी सर कोई एटम हुआ था और वो करते करते वो फैला और बिग बैंग हुआ, और ये कायनात लाखों, ये देखिए जनाब, सेकंड 3 मिनट 3000, फिर 3 मिनट्स में ये हुआ, फिर 300 साल में ये हुआ, 1 बिलियन 1000 मिलियन ईयर्स में ये हुआ, 15,000 मिलियन ईयर्स में ये हुआ, और फिर इंसान बन गए तुक्के के साथ। यानी इतना बड़ा तुक्का लगा माशाल्लाह, ऐसा तुक्का लगा कि जनाब बल्ले बल्ले हो गई। और and secular thinking must attribute the creation of the universe to a random accident. ये तुक्का लगा, मेरे नाक कान आंख नाखून दिमाग बन गया। The effect of this on Western thought is well illustrated by a quote from Bertrand Russell. आप सुने उन philosophers को जो अब्बा जान है सोशल साइंस के। ये बर्ट्रैंड रसल साहब जो अब्बा जान है सोशल साइंस के, वो क्या कहते हैं? 1903, a leading philosopher and architect of dominant worldview, वो क्या कह रहा है? Man is the product of causes which had no prevision. इंसान उन चीजों से मिलकर बना है, इनको उसने बनाया है जिसकी कोई सोच नहीं थी कि वो आखिर में जाकर क्या बनेगा। और इंसान का origin, his growth, his hopes and fears, his loves and his beliefs are but the outcome of accidental collocations of atom. ये हादसाती तौर पर एटमों का धमाका हुआ और मिले हैं, और ये हादसा हुआ कि हम बन गए। मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। ये तो एक धमाका हुआ था, एक हादसा हुआ था। और दुनिया की कोई फायर, ये मुहावरतन कह रहा है, नो फायर नो हीरोइज्म, कोई हीरोइज्म, कोई इंटेंसिटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग, जो मर्जी कर लो, इंसान की जिंदगी जो है ना कब्र के बाद नहीं चल सकती। कोई जिंदगी नहीं है मरने के बाद, ये खत्म हो जाने वाली है। ऑल द लेबर्स ऑफ द एजेस, हजारों साल इंसानों की मेहनत, उनका वक्फ हो जाना, उनकी आरजुएं और तमन्नाएं, और दिन और रात की मेहनतें, और इंसान की अक्ल दानिश, ये सब कुछ राख का ढेर बन जाएगी। destined to extinction, ये राख का ढेर बन जाएगी in the vast death of the solar system, and the whole temple of man's achievement, और इंसान की तरक्कियों का सारा गुंबद ये इस कायनात के ढेर में दफन हो जाएगा। अरे इंसानों, हम दुनिया में तबाह और बर्बाद होने के लिए आए हैं, ये एक हादसा था जो पेश आ गया, हम बन गए हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। Only within the scaffolding of this truth, इस सच्चाई की बुनियादों में जनाब आपको पता चलेगा आप कौन है। अब बताएं जनाब, ये ना उम्मीदी बेच रहे हैं या उम्मीद बेच रहे हैं? बताइए जनाब। शाहदुल साहब, ये देखिए, ये ना उम्मीदी, अब जब ये तय हो गया कि हम दुनिया में गलती से पैदा हो गए हैं और तुक्का है, तो फिर क्या करना है जनाब? इसके असरात क्या हुए? तबाहकुन असरात पैदा हो गए। जब आपको पैदा हुआ आबिस रजा साहब, आपको ये पता चला कि it was accidental. The idea that all human effort is ultimately meaningless, which is the natural consequences of rejection of religion, is at the heart of all Western social science. This is in direct conflict with Islamic teachings. Islam में कुरान ये कह रहा है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा,
ارے میں نے تمہیں بے مقصد نہیں بنایا. تو اب لیکن ان کا عقیدہ بدل گیا. تو کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ریلیجیس ویلیوز جو تھی نا, we just illustrate its impact on one dimension of life below. It is impossible to trace all of the harmful effects of this idea of the meaninglessness of life on Western thought. We just illustrate its impact. Common religious values, common جو مذہبی values تھی نا, form the basis for community. Community اکٹھی کس پر ہوتی تھی؟ religious values پر. اور لیبر کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ collective effort for common goals. Since common goals and community cannot be assumed in a secular society, the basis for labor became the money wage. Labor کا مطلب مزدوری ہو گیا. مزدوری کا مطلب کیا ہوا؟ The spirit of cooperation was replaced by the evolutionary ideal of competition. This led to a large portion of the life of humans to be a meaningless pursuit of wealth in a capitalist society. تو آج ہم نے جان منڈل کو دیکھا نا, اس کے الٹ کر رہا تھا. ماشاءاللہ جان منڈل کہہ رہا تھا ارلیسٹ کرسچن تھنکرز کے پاس جاؤ. یہ جناب کارل مارکس صاحب تھے, یہ یہودی تھے, سوشلسٹ تھے. پروڈکشن آف گوڈز از نو لانگر اے سوشل وینچر. چیزیں بنانا, گاڑیاں بنانا, گھر بنانا, لکڑی کا کام کرنا, یہ سماجی وینچر نہیں ہے, یہ سماج کی خدمت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ Karl Marx described this in terms of alienation. Alien ہو گیا, which refers to the separation of the worker from the product. لکڑی اور لکڑی کا کام کرنے والا علیحدہ ہو گئے, پروڈکٹ اور بندہ علیحدہ ہو گیا. Production of goods is no longer a social venture in which the capitalist and laborer all work together for a common good of society. یہ پہلے اکٹھے کام کرتے تھے, لیکن اب کیا ہوا؟ Laborer sells his labor for money in an adversarial relationship with the capitalist, who also produces goods for profits in pursuit of selfish goals. یہ جناب چیزیں چینج آ گئی. اوریجن آف مین کے بارے میں کہا, یہ انسان کہاں سے آیا؟ اب دیکھیں گے جی, مینی سیکولر ویو یہ کہتا ہے کہ many prominent architects of secular view have remarked it was not possible for a thinking man to be an atheist. Theory of evolution جو دھوکہ اور فراڈ تھا ڈارون سمتھ کا, اس سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا کہ آدمی سوچے کہ ہم بائی چانس پیدا ہوئے. اس نے ایک ایسی شیطانی حرکت کی. ڈارون سے پہلے سب کہتے تھے یار سیکولر ہو بھی جاتے تھے نا, کہتے تھے نہیں یار ہمیں کسی نے بنایا ہے یار. ڈارون صاحب نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بچہ جرمنی میں اسکول میں پڑھتا تھا. ایک دن ٹیچر نے کہا پیارے بچوں ہم سب بندروں کی اولاد ہیں. تو حذیفہ نے کہا میم آپ لوگ ہوں گے, میں نہیں ہوں. ایک چھوٹا بچہ بھی کلاس 3 کا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں بندر میرے انسیسٹرز تھے. لیکن ڈارون نے یہ کروا دیے. ڈارون نے کیا کہا؟ ڈارون نے کہا کہ ہم جو ہیں بندر ایپس تھے اور پہ ایوالو ہوتے ہوتے جناب یہ بن گئے. تو ہوا یہ کہ 1950 میں ایک ایسی کھوپڑی ملی جس کو اوپر والا سر انسانوں کا تھا, نیچے والا بندر کا تھا. تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے مرحوم ڈارون صاحب کی تھیوری پروو ہو گئی, ثابت ہو گیا, یہ سائنس بن گئی. ان کا جو نظریہ تھا وہ ثابت ہو گیا, مشاہدہ ہو گیا ہے, اور ہم واقعی بندروں کی اولاد ہیں. یہ جو انسان اور بندر کے ٹرانزیشن میں ہمیں ایک سٹرکچر مل گیا. اس کھوپڑی کو سجایا گیا, اس کو میوزیم میں ڈال دیا گیا, اور انگلینڈ کا واقعہ ہے. اور لوگوں نے اس کو جناب بیچلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی کر لی. اس کو 15 20 30 40 سال گزرے, انسانوں کو ایسی نئی ٹیکنیکس معلوم ہوئی جس سے وہ ایگزیکٹ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کھوپڑی کتنی پرانی ہے. تو سائنٹسٹ نے کہا کہ ہمیں یہ کھوپڑی دو, ہم ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم کر لیں گے. وہ بہت ریزسٹنس کے بعد جب ان کو یہ ملی, اور انہوں نے جب کھوپڑی کو دیکھا تو ان کے جناب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. انہوں نے دیکھا کہ کھوپڑی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس کی ایج اور ہے, اور جو دوسرا حصہ ہے اس کی ایج اور ہے, کوئی چند 100 سال پرانا ہے مے بی, اور کچھ مے بی
मे बी 100 साल पुराना है। वो बहुत हैरान हुए और गहराई से देखा तो पता चला ये 2 अलग खोपड़ियां थी, इनको जोड़ा गया है। और गहराई से देखा तो पता चला इनके ऊपर केमिकल लगाकर पुराना किया गया है। और फिर उन पर यह हकीकत आश्कार हुई कि 2 इंसान की और बंदर की खोपड़ियों को लेकर किसी बंदे ने सबको मामू बना दिया, और ऐसा मामू बनाया है कि उसके ऊपर सैकड़ों दर्जनों लोगों ने रिसर्च भी कर दी और इस अकीदे को पूरी दुनिया में आम कर दिया। और ये पुकार उठे फ्रांस और जर्मनी वाले कि हमारे बाप दादा बंदर थे, और इस अकीदे के खिलाफ जो बोलेगा उसको कैद भी होगी। अभी भी फ्रांस का ये ऑफिशियल अकीदा है। ये अभी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है, वरना आप अकीदे के खिलाफ मुल्क में बोल नहीं सकते, और अगर आप बोलेंगे तो यू आर सपोज्ड टू बी इन जेल। ये वो इल्म हिकमत के मोती जो सोशल साइंस के थ्रू मार्केटिंग, फाइनेंस, HR की किताबों में आए। आप अंदाजा लगाएं इंसान की जहनत और उसकी अकल और दानिश का कि इस अकीदे का हामिल जो किताब लिखेगा वो कितनी सच्ची होगी, वो इंसानों के लिए कितनी शानदार होगी, जिसकी सोच, जिसकी PhD, जिसकी रिसर्च, जिसके पेपर्स की बुनियाद ये बन जाए। Darwin's theory was the first to use purely the random forces of chance and change as an explanation of the wide variety and complexity of the species. Darwin's theory suited the needs of the secular thinkers. ये बड़े खुश हो गए कि यार पादरियों के खिलाफ हमें टूल मिल गया, ये पादरी हमें खुदा खुदा कहकर परेशान किया हुआ उन्होंने। ये देखे खोपड़ी मिल गई, बंदर हमारा दादा अबू हैं, और ये तो रैंडम फोर्सेस थे, तुक्के से बने, कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं, तो अब क्या करो, अब मौज मेला करो। तो जनाब वहां से उनको key concepts from the theory of evolution are used to explain the behavior of firms. कि perfect competition का ख्याल, मुकाबला, cutthroat competition, ये सारा वहां से निकला है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ये जनाब बड़े बड़े लोग हैं, ये चार्ल्स डार्विन, एरास्मस डार्विन, इसके नाम पे जी एरास्मस एजुकेशन सिस्टम बन गया, अल्लाह रहम फरमाए, जिसकी बुनियादों में ये खून हो। और ये जो बड़े बड़े हमारे ये जो स्कॉलरशिप्स अमेरिका में मिलते हैं, कार्नेगी मेलन फाउंडेशन है, और ये जनाब ये है, ये वाली है रॉकफेलर फाउंडेशन। ये क्या कह रहे हैं? There is no doubt, however, that it provided mental and social justification for the brutal capitalist. ये जो डार्विन की थ्योरी थी ना, इसने जस्टिफिकेशन दी इन बड़े सरमायादारों को for the survival of the fittest के रूल पर अप्लाई करें। Capitalists such as Andrew Carnegie and Rockefeller adopted Darwinism and used it to justify their practices of driving smaller competitors out of business and exploiting their workers with grueling labor and unsafe sanitary conditions. वो कहते थे ये मजदूर जो है ना, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में पीछे हैं, ये छोटे हैं, ये कमजोर हैं, इसी तरह मर जाने दो, ये इसके मुस्तहिक हैं कि इनको केमिकल वाले उनको सेफ्टी ग्लव्स देने की जरूरत नहीं है। ये हम हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले, ये इसी हालत में जिंदा रहें और मर जाएं तो बेहतर है। थ्योरी ऑफ इखलाकियात कैसे हो? से अर्ली सेकुलर थिंकर्स भी जो है ना, वो भी ये कहते थे यार हमें अखलाकियात का कोई कोड चाहिए। शुरू में कहते थे यार वो ठीक है, खुदा को नहीं मानते, लेकिन क्रिश्चियनिटी से उधार ले लो, अखलाकियात का जो है ना कॉन्सेप्ट मजहब से ले लो। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि ये जब एडम स्मिथ, डेविड ह्यूम, बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट में लाए, फिर उन्होंने ना बाइबल को भी खैराबाद कह दिया और कहा कि हमें जो है ना कोई साइंटिफिक बेसिस चाहिए यार, हमें कोई साइंस चाहिए। तो ह्यूम साहब ने क्या कहा, उन्होंने फिर ये लिखा है, ये जनाब his theory was the first in modern philosophy to be completely secular without reference to God's will, a divine plan. Hume is also directly argues that key moral values are matters of social convention. Social convention के क्या IBA के लोग तय कर लें कि यार मेरे ख्याल में आपस में तय कर लो अच्छे कपड़े किसको पहनेंगे, आपस में तय कर लो हया की डेफिनेशन क्या है, आपस में तय कर लो कि जनाब लड़के और लड़की का ताल्लुक कैसे होना चाहिए, आपस में तय कर लो कि जनाब हमसायों के साथ कैसे डील करना चाहिए। Based on these foundations, later philosophers like Foculari and Auguste and John
made a conscious effort to create an alternative to Christianity called the religion of humanity. इसको उन्होंने साइंस कहना शुरू कर दिया. ओ भाई साइंस कैसे कहते हो तुम? एक समाजी इल्म है जो तुम्हारे ख्वाबों तुम्हारे ख्यालों की आवाज का है. साइंस कैसे? ये फिजिक्स की तरह लॉ नहीं है. According to the religion of humanity, the goal of human conduct is, इंसान का effort का मकसद क्या है? Is happiness. Whatever produces pleasure is moral. जो चीज मजा दे वो अच्छा है. सिगरेट पी मजा आ रहा है तो वो मोरल है. अगर वो आइस पी कर मजा आ रहा है तो मोरल है. किसी का गला काटने में मजा आ रहा है तो वो मोरल है. डांस करने में मजा आ रहा है तो मोरल है. Whatever produces pain is immoral. In the word of one of the most distinguished advocates, John Stuart Mill क्या कहता है? ओए होए, the creed which accepts utility, वो मखलूक वो लोग which accepts as the foundation of morals utility or the greatest happiness principle. तो क्या कह रहा है? Actions are right in the proportion as they tend to promote happiness. अगर आइस ज्यादा पीने में ज्यादा मजा आना तो वो ठीक है. किसी को मारने में कत्ल करने में ज्यादा मजा आ रहा है तो वो ठीक है. और वो चीजें गलत हैं. कब गलत हैं? As they tend to produce reverse of happiness. By happiness is intended pleasure and the absence of pain. By unhappiness pain. ये जनाब अकीदा बन गया. Traditional concepts of morality were replaced very gradually by those based on utilitarianism. ये ज़माने का खुदा बन गया. Change क्या आई? Homosexuality मना था. Homosexuality was classified as a disease and a crime. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. But to speak against it is now a crime. Marital infidelity and pregnancy out of wedlock were considered shameful. ये गलत काम थे. आज से 1930, 35, 32, 40 में ये सारे गलत काम थे. लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल बन गए. क्यों बन गए? अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहू. अरे तुमने नहीं देखा उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया. मेरा जिस्म मेरी मर्जी. मन इत्तखज़ इलाहहू हवाहू. अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया. वअज़ल्लहुल्लाह. और अल्लाह ने भी उन्हें कहा ठीक है तुम गुमराह हो जाओ. ठीक है जो कर लो. अला खत्म अला समीही. और खुदा ताला ने उनके सुनने पर उनके दिलों पर उनके देखने पर मोहर लगा दी. फमन यादीही मिन बादिल्लाह. And जनाब and put a cover on his sight. Who then will guide them after Allah has withdrawn guidance? सोसाइटी के बारे में क्या रोल था? एज एन इस्लाम इस सब सवालों के जवाब दे रहे हैं. सोसाइटी के बारे में सोशल साइंस ने क्या कहा? यूरोपियंस थॉट ऑफ सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिक होल. सोशल साइंस से पहले वो समझते थे हम एक खानदान हैं. हम सब एक खानदान है. हमारे दादा अबू आदम और हव्वा थे. हम सब एक बरादरी हैं. हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं. हमारे अंदर कॉमन ब्लड है. लेकिन जनाब उसने क्या किया? तोड़ कर रख दिया. उसने क्या कहा? You don't kill me and I won't kill you. Hey, sounds good. The social contract provides for meaning of regulating disputes among individuals. The idea of social contract as a replacement for religious basis बन गया. और उसके बाद क्या हुआ? थ्योरी सोसाइटी में ये मैकावली का जो टेस्ट किया था हमने क्या? The idea of coercive power. जिसकी लाठी उसकी भैंस. मैकावली ने कहा might is right. USA leaders यही तो कहते हैं. USA leaders have used this as a basis for their flouting international law. Machiavelli to be a teacher of wickedness on the ground that he counsels leaders to avoid the common values of justice, mercy, temperance, wisdom, and love of their people. वो कहता है जालिमों, बादशाहों, हुक्मरानों, ये मोहब्बत शहबत कुछ नहीं होती. असल चीज क्रूएल्टी है. हुकूमत को कायम रखने के लिए क्रूएल्टी, वायलेंस, fear and deception. Thus, in direct opposition to the moralistic theory of politics, Machiavelli says that the only real concern of the political ruler, only concern kya hai, is the acquisition and maintenance of power.
اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ Incalculable damage has been caused by the notion that the state is above morals. میکاولی نے کہا کہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ کی جو حکومت ہے نا وہ ہر اخلاق سے اوپر ہے، ہر مورالٹی سے اوپر ہے. حکومت کو قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو، حکومت کو قائم کرنے کے لیے فراڈ کرنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے تو دے دو. Many of the worst excesses of the Nazis and the fascists were justified on these grounds. ڈرسٹن ایک جرمنی کا شہر ہے. The fire bombing of Dresden, یہ برٹن UK نے اس پر بامبنگ کی تھی. 8 لاکھ لوگوں کو شہر میں مار دیا یار، 8 لاکھ لوگوں کو. The list of crimes committed in the name of allegiance to a nation. وہ کہہ رہا نا میرا وطن، سب سے پہلے میرا وطن، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے میرا پاکستان نہیں ہے، سب سے پہلے میری ویلیوز ہیں، میں کس لیے پیدا ہوں، سب سے پہلے، اس کے بعد پاکستان. تو پاکستان لینڈ آف پیور اس وقت ہوگا جب ہمارا یہ بیکاویلین تھا ماڈل. نو ادر نیشن کین ریپروڈیوس اینی پیرل. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان بعد میں ہے، پہلے میرا ویلیو سسٹم ہے. نو ادر نیشن کین پروڈیوس اینی پیرل ٹو دی ایگزامپل آف دا سیج آف اڈرن. یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیپر میں یہ لکھا ہے. تو علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے. تو ہوا یہ تھا کہ یورپ کے اندر ٹرکی کی حکومت تھی اور ایک شہر کے اوپر بلغارینز نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ شہر ہے دس از اے سٹی. تو بلغارین فورسز نے چاروں طرف سے اس شہر کو سیج کر لیا، اور وہ شہر جو تھا مسلم امپائر سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. چاروں طرف سے سیج ہے، اور وہاں پر جہاں پہ وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ وہاں پر چیف، اس علاقے کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور وہاں پہ مشورہ ہوا کہ یہ سیج لمبا ہو گیا 2 مہینے 6 مہینے، اور وہاں پر کھانے کا سامان کم پڑ گیا. اس شہر میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن وہاں کے جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ امیر بھی ہیں، ان کے پاس کھانا پڑا ہوا کافی آگے مہینوں کا. تو چیف آف آرمی سٹاف وہاں کی لیڈرشپ یہ کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کھانا چونکہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے لوگ بھوک سے مر نہ جائیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ سب سے کھانا اکٹھا کر کے کنٹرول کر دیا جائے. تو وہاں پر اب یہ دیکھیں ہوا کیا. وہاں پہ یہ طے ہوتا ہے کہ جناب چونکہ سب سے پہلے پاکستان کا کیا مطلب ہے، سب سے کھانا لے لیا جائے اور پھر لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دیا جائے تاکہ ہمارا ملک بچ سکے. تو علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی ہے، میں نے نہیں لکھی، اور یہ ہسٹری اس میں ریکارڈڈ ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں. محاصرہ ادرنا، دا سیج آف ایڈریانوپل. یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھڑ گئی، یورپ میں جس وقت حق اور باطل کی جنگ چھڑ گئی، حق خنجر آزمائی پر مجبور ہو گیا. جو سچ تھا نا اس کو لڑنا پڑ گیا. گرد صلیب گرد قمر ہلکا زن ہوئی. صلیب کہتے ہیں وہ جو صلیب ہے کرسٹ، قمر کہتے ہیں مون کو. جب صلیب کی کراس کی اور کرسنٹ کی لڑائی ہوئی، شکری حصار دھرنا میں محصور ہو گیا. جو چیف آف آرمی سٹاف تھے نا ان کا نام تھا شکری صاحب. جو جنرل شکری تھا نا کرنل صاحب، یہ اس سیج کے اندر آ گیا. مسلم سپاہیوں کے ذخیرے ہوئے تمام. جو مسلم سپاہی تھے نا ان کے سارے ذخیرے ختم ہو گئے. روئے امید آنکھ سے مستور ہو گیا، آنکھوں سے امید ختم ہو گئی. آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے، جو ترکش چیف آف آرمی سٹاف کے آرڈر سے کیا ہوا، آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا. شہر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا نا اس کو ایبروگیٹ کر کے مارشل لا لگا دیا گیا. آئین جنگ لا، مارشل لا شہر کا کانسٹیٹیوشن بن گیا. ہر شے ہوئی ذخیرہ لشکر میں منتقل. فوج نے ہر گھر سے کھانے کی چیزیں اٹھانی شروع کر دی. ہر گھر سے چیزیں اٹھاؤ اور کیمپ میں لے آؤ. شاہین گدائی دانائے عصفور ہو گیا. وہ جو شاہین تھا نا جو خود شکار کیا کرتا تھا وہ دانے دانے کا محتاج ہو گیا، اور ساری گندم کے ڈھیر کرنے شروع کر دیے گئے گراؤنڈ میں. لیکن فقیہ شہر نے جس دن سنی یہ بات، وہاں کے جو ریلیجیس افیئرس کے جو انچارج تھے امام، انہوں نے جب یہ بات سنی
گرما کے مثل سائقہ طور ہو گیا. وہ طور کہتے ہیں طور پہاڑ جس کے اوپر بجلی گر رہی تھی, اور جب وہ بجلی گری تھی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. جب فقیہ شہر نے, جو ریلیجس چیف تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ جنرل شکری نے یہ کام کر دیا ہے اور سارے چیزیں اکٹھی کرنے شروع کر دی ہیں, وہ بجلی کی طرح بے چین ہو گئے اور جل اٹھے, اور کیا کہا, ابھی سنیں ذرا, ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام. صرف مسلمانوں سے تم کھانے کی چیز لے سکتے ہو, یہودیوں اور عیسائیوں سے تم نہیں لے سکتے, کیونکہ تم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے, اور وہ وعدہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ ذمی ہے, تم ان سے ٹیکس لیتے تھے, جن سے تم ٹیکس لیتے ہو نا, ان سے پوچھے بغیر ان کی چیز نہیں لے سکتے. چیف آف آرمی صاحب, ہم یوٹیلیٹریزم کی بات نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ سوشل سائنٹسٹ, ہم میکاویلین نہیں ہیں. ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام. فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا. چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج, مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا. مسلم, جی سمجھ آئی جناب میرے پیارے ساتھیوں؟ آئی ہوپ. جی جناب, ہمارے سر یہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ یہ نکلا, اللہ کی مدد آ گئی, اور وہ عیسائی اور یہودی پریشان ہو گئے کہ یار واہ کمال ہو گیا, اور وہ سیج چلا, اور جناب وہ عیسائی یہودی اتنے لائل بن گئے, اور پھر باہر سے بھی فوجیں آئیں, تو 6-7 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ سیج ختم ہو گیا اور مسلمان جیت گئے. اب آپ بتائیں, جس کے پاس طاقت ہو وہ ایسا سوچ سکتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ دوسروں کے اندر ضرورت ہے, دونوں فارغ ہو چکے ہیں. کہتے جی پہلے پاکستان کہاں سے آگے بھائی؟ تم پاکستان کس لیے بنایا؟ پاکستان تو اللہ کے لیے بنایا, لا الہ الا اللہ. اگر تمہارا ویلیو سسٹم کے اوپر اسٹینڈ نہیں کر سکتے, اگر آپ نے دشمنی کسی سے کرنی ہے تو اس کو بھی ویلیو سسٹم کے ساتھ دیکھنا ہوگا. اینڈ پاکستان میں جب 19 چلے وہ لمبی ہو جائے گی بات, تو اینی کوشچن جناب؟ پاکستان بھی دیکھا نا, لینڈ ہے نا, تو ختم ہو جائے گا 1 لاکھ سال بعد, قیامت آئے گی تو ختم ہو جائے گا. تو پاکستان سب سے پہلے پاکستان, ہمیشہ پاکستان, مطلب وہ ریلیٹو ٹرمز میں از فائن, لیکن وی آر, ایک منٹ آگے کیوں نہیں جا رہا, اوکے. یہ علامہ اقبال نے یہ دیکھیے فرمایا, یہ آگے نہیں جا رہا, جسٹ اے منٹ, میں اس کو چیک کر لوں اسکرین. اسکرین ہیلڈ ہوگی ذرا ایک منٹ. اوکے, آئی تھنک اٹ ول ورک ناؤ. اوکے, تو یہ سوشل سائنس کا کمال ہے کہ اس نے ہمارے ویلیو سسٹم کو ایسا ڈسٹرب کیا. اوکے, چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج. تو کہتے تھے ہمارے اللہ نے ایک پرومس کیا ہے نا, ہمارے پیارے نبی, اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, تم وعدوں کو پورا کرو, تمہارے وعدے پورے کیے جائیں گے. تو وعدہ کا پورا کرنا پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج, مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یو ایس میں دیکھیں نا, وین اسٹیٹ پاور, اب جب اسٹیٹ کہتی ہے کہ یار میں امپورٹنٹ ہوں, میں خدا ہوں, جب اسٹیٹ کہتی ہے نا کہ میں امپورٹنٹ ہوں, میں خدا ہوں, میں سب سے پہلے ہوں, پھر کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں. When state power provides the basis for morality, allegiance to the rule of law must override personal notions of morality and justice. For example, in the US legal system, US کا جو legal system ہے, اس میں وہ پتہ کیا کہتے ہیں? Justice is an incidental byproduct of a mediated struggle between opposing interest. قاتل اور مقتول کے درمیان قانونی جنگ ہوگی, اس جنگ کے درمیان جو نتیجہ نکلے گا اس کو جسٹس کہیں گے. آگے سنیں. An excellent discussion of the ethical issues is given by a panel of lawyers
یہ ایک آرٹیکل ہے, وہ کہہ رہے ہیں اے کیس آف کمپیٹنگ لائلٹیز ان اسٹینفورڈ میگزین, اسٹینفورڈ میں چھپا ہے. اس پینل میں یہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ دو بندے ہیں ان کے اور ان کے آپس میں لڑائی ہے, ان میں سچا کون ہے؟ ان دونوں نے اگری کیا, پینل میں سب نے اگری کیا دیٹ اے لائر ڈیفینڈنگ, یہ میل ہے, یہ میل کلائنٹ ہے, یہ فیمیل کلائنٹ ہے, ان دونوں کے وکیل ہیں, یہ وکیل ہیں, یہ ایرو والے یہ وکیل ہیں, یہ دو ڈیفینڈنگ اے میل کلائنٹ, یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. ڈیفینڈنگ اے میل کلائنٹ known to him or her to be guilty of rape nonetheless is obliged to destroy the reputation of the female victim if this is the best possible defense. There was agreement among all lawyers that rules must be followed whether or not a just outcome is obtained. رولز کو فالو کر کے یہ ظالم آدمی جس نے غلط کام بھی کیا ہے, کہ رولز کو فالو کر آ کے یہ اسی کو یہ غلط ٹھہرا سکتا ہے, اور اگر رولز کو فالو کر لیا تو امریکن لا کہتا ہے یہ بندہ صحیح ہے. Again, this is radically different from Islam, where allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala overrides all others. ہمارا سب سے پہلے اللہ سبحانہ wa ta'ala ہے, where allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala overrides all others, and provision of justice rather than following artificially designed rules is the goal of the state and individuals within it. نالج کے آخری چیز رہ گی, پھر ہم ختم کرتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا. نالج کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ایپسٹمالوجی کہتے ہیں, نالج کی حقیقت. اس علم کو ایپسٹمالوجی کہتے ہیں. اس سے پہلے نالج کی حقیقت کیا تھی؟ جو وہی ہے, جو کلام الہی ہے, وہ حتمی نالج ہے. If Bible, which was nearly universally believed to be the literal truth and word of God, یہ reliable نہ رہی social science کے بعد, consensus was کہ یہ سچ نہیں ہے. Thus it became essential کہ کرائٹیریا کیا بنایا جائے, کیا سچ ہے. ہیوم صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ سچ اور غلط کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب سچ کیا ہے؟ اگر تم کسی لائبریری میں چلے جاؤ, if we take in our hand any volume of divinity, اگر کسی لائبریری میں چلے جاؤ, وہاں پر تصوف, روحانیت, میٹا فزکس کہتے ہیں روحانیت, فزکس کے بیونڈ, اگر تمہیں روحانیت, میٹا فزکس کی کوئی کتاب مل جائے تو سب سے پہلے یہ سوال کرنا کیا اس کے اندر کوئی ریزننگ ہے, کیا اس کے اندر کوئی نمبر ہے, کوئی کوانٹیٹیو ٹیکنیک اپلائی کی گئی ہے, ریگریشن, ایس پی ایس ایس, کیا اس میں کوئی فارمولا لگایا ہوا ہے, ڈز اٹ کنٹین اینی ایکسپیریمنٹل ریزننگ, اس میں کوئی ایکسپیریمنٹل ریزننگ دی گئی ہے. اگر ہے تو ٹھیک, اگر نہیں تو کیا کرو گڈیل صاحب, کمیٹڈ ٹین ٹو دا فلیمز, آگ لگا دو اس کتاب کو, جلا دو اس کتاب کو, اور اٹ کین کنٹین نتھنگ, یہ کچھ نہیں ہے سوائے شاعری کے اور دھوکے کے. تو سچ کی ڈیفینیشن کیا کی گئی؟ ارے تم جعلی کھوپڑی لے آؤ, اس جعلی کھوپڑی کے اوپر ڈیٹا ہو, نمبر ہو, اس کو دھوکہ دے کر جو مرضی کر دو, وہ ڈیٹا ساتھ آ گیا نا, وہ سچ بن گیا. اور ریلیٹیو ٹرمز میں valid knowledge is based solely on human experience, observations and logic. This foundation for knowledge is directly opposed to the Quranic description. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور باقی الہامی کتابوں میں کیا کہا؟ Those with taqwa as being those who believe in the unseen. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انسین کے اوپر بلیو کر لیا وہ ہیں کامیاب. تو انسین کی جو ڈیفینیشن ہے نا, تھوڑی سی یہ بھی سمجھانے والی ہے, اللہ مجھے بھی سمجھا دے. آپ جو ہے نا جی, یہ آگے چلتے ہوئے بتاتا ہوں. یورپین اٹیمپٹ ٹو ایلیویٹ سائنٹیفک نالج, یورپ نے اس سوشل سائنس کے نالج کو ریویلڈ نالج کی سطح پر لانے کی کوشش کی, and to relegate religious knowledge to the dustbin has been tremendously consequential. تو اب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا دین, ہمارا قرآن ہمیں اندھا دھند تقلید کی بات نہیں کرتا. ہمارا دین کہتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں,
उन चीज़ों की बुनियाद पर इन्फर करो और कुछ चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आएंगी उन पर बिलीव कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ताहिर साहब को, ताहिर साहब ये देखें बिजली ने पंखा चला दिया, तो इसमें क्या बिजली नज़र आ रही है आपको? आपको बिजली नज़र नहीं आ रही, लेकिन बिजली का मजहर नज़र आ रहा है। आपको बिजली नज़र नहीं आ रही, लेकिन बल्ब जलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बिजली नज़र नहीं आ रही, लेकिन पंखा चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर एक आदमी पागल है और एक आदमी बिल्कुल सही है, इन दोनों को बैठाएं। पागल आदमी ऐसे हवा में बातें कर रहा है और इशारे कर रहा है, कभी बैठ रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, और एक आदमी बैठकर किताब लिख रहा है, आराम से काम कर रहा है, तो आप कहेंगे कि जनाब ताहिर साहब आपको अकल नज़र आ रही है? आप कहेंगे जी मैं तो अकल को मानते नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अकल का मजहर तो नज़र आ रहा है। अकल जो है उस आदमी में जीरो के करीब है, वो पागल बना हुआ है। एक आदमी में अकल है, वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। तो अकल भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम उसको मान रहे हैं। बिजली भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसको हम मान रहे हैं। सूरज, ज़मीन, पहाड़, ऊंट, केमिकल, बादल, दरिया, ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये किसी कुव्वत का, ताकत का मजहर है, उसका इजहार हो रहा है उनके अंदर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जनाब इन चीज़ों को देखो, अकल इस्तेमाल करो और ये देखो इनको किसने बनाया। जन्नत और जहन्नम तुम्हारी सोच से बियॉन्ड है। मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होना है ये तुम्हें नहीं मालूम हो सकता, कोई फिजिक्स नहीं बता सकती, और तुम्हारी रूह क्या है ये भी तुम्हें मैंने सरप्राइज रख दिया है। इन चीज़ों को बगैर देखे मान लो, बाकी चीज़ों को मजहर समझ कर और कर लो, तो जनाब इसको कहते हैं ये बिलीव करना और तकवा। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। यूरोपियन जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने इस सब को नलिफाई कर दिया। बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द न्यूटोनियन फिजिक्स एंड द फिजिकल साइंस इन जनरल, there was an attempt to model methodology for economics on the pattern of natural sciences. तो उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सोशल साइंस को इसके ऊपर भी मैथ के फार्मूले लगेंगे तो ये साइंस बन जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जनाब ऐसे करें कि ह्यूमन बीइंग्स, लोहा लकड़ी पत्थर जो है ना, लोहा लकड़ी पत्थर के ऊपर फार्मूले लग जाते हैं, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर फार्मूले लग जाते हैं। पानी का बिहेवियर, लोहे का, तांबे का बिहेवियर कराची, लाहौर, टम्बकटू, न्यूयॉर्क में सेम होगा। उन्होंने अजूम किया कि इंसानों पर भी फार्मूले लगाने हैं, ताहिर साहब पर भी फार्मूला लगाना है, तो ताहिर साहब पर या शाहिद कुरैशी पर फार्मूला लगाने के लिए अज्यूम करना पड़ेगा ये भी पत्थर और लकड़ी है, इनका भी बिहेवियर हर शहर में हर जगह पर सेम रहता है, हालांकि मेरा बिहेवियर चेंज होता है। माई बिहेवियर इज प्रोबेबिलिस्टिक, लोहा लकड़ी पत्थर इज डिटर्मिनिस्टिक। उस पर फार्मूले लगेंगे, कोई फार्मूला मेरा बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मेरी तरबियत अच्छी हो जाए, मेरा इखलाक और मैं सेंसेस में हूँ, आई कैन डू गुड। और अगर शैतानी बिहेवियर, शैतानी असरात आ जाएं, ह्यूमन बीइंग कैन डू टेरिबल थिंग्स। तो उन्होंने इंसान को अज्यूम कर लिया स्टैटिक। इकोनॉमिक्स वालों को अल्लाह भला करे, अल्लाह इनको हिदायत दे। उन्होंने क्या अज्यूम किया नवीद साहब? उन्होंने अज्यूम किया कि जितने भी इंसान हैं ये सेल्फिश हैं। ये अजम्पशंस हैं इकोनॉमिक्स की। ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश, ये यूटिलिटेरियन हैं, अपने सेल्फिशनेस को मैक्सिमाइज करते हैं, और ये रिसोर्सेज दुनिया में थोड़े हैं। रिसोर्सेज चूँकि थोड़े हैं तो इंसान उन रिसोर्सेज को ग्रैब करेगा और उनको बैरियर्स टू एंट्री लगाएगा, जो उनको हासिल करना चाहेगा उनसे लड़ेगा, और कम बैरियर्स टू एंट्री लगाकर कट थ्रोट कंपटीशन करेगा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द नेम ऑफ द गेम। अब ये है सोशल साइंसेस की तालीमात जो मैंने आपको बताई। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिस्ट्स हैव फेल्ड टू अप्रिशिएट, ये जो सोच है ना सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स की, has failed to appreciate the possibilities and potential for change and transformation in human beings. Human beings लोहा लकड़ी पत्थर नहीं है। Human beings are free to choose in ways not determined by their past. तो जनाब ये आर्टिकल हमारा ख़त्म होता है। तो जनाब और I think ये इसने क्या कहा था, Hume and followers recognized that morality could not be derived from facts and logic. They refined the basis for morality by equating morality with happiness. Or Max Weber claimed that science was purely based on observation and logic and did not deal with moral questions. तो ये जनाब
اب دیکھنا مثال کے طور پر یہ اکنامکس کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, اب یہ موٹو آدمی ہے, پیٹو آدمی ہے, یہ کھانا بھی پڑا ہے, یہ بھی پڑھا ہے, یہ بھی پڑھا ہے, یہ بھی پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کچھ سوال اکنامکس میں پیدا ہوتے تھے لائک which relates to ethics, morality and concepts of fairness and justice. اگر میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں in anticipation of scarcity اور زیادہ قیمتیں چارج کرتا ہوں, is this clever or immoral؟ یہ چلاکی ہے یا غیر اخلاقی؟ اکنامکس اس چیزوں کو ڈیل ہی نہیں کرتی, کہتے ہیں یہ ہمارا ایریا ہی نہیں ہے. موریلٹی کیا چیز ہے؟ پیسہ بناؤ. should one make profits from the misery of others? is it fair to charge interest؟ یہ ہمارا ایریا ہی نہیں ہے, اکنامکس والے کہتے ہیں. اس بیہیویئرل اکنامکس والوں نے اب کہنا شروع کیا اس گلوٹونی یعنی دبا کے کھانا گناہ ہے, اسپیشلی when the money spent to combat. حالانکہ اس بندے کو جم جانا پڑے گا, بیماریاں آئیں گی اور جم والوں کو $5,000 دینے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ گناہ ہے when the money spent to combat the problem of being overweight is more than enough to eliminate hunger and malnutrition in the world. These and similar questions were central to the earlier formulations of economics. 1500-1600 کی کتابوں میں economics میں یہ سوال ہوتے تھے. They are no longer part of the subject of economics. These questions cannot even be formulated and posed within the modern language used by economists. Many economists would consider them meaningless questions, while others regard them as outside the discipline of economics. Unfortunately, مسلمان بھی اس دھوکے میں پڑ گئے اور وہ بھی اکنامکس کو امپورٹنٹ سمجھ کے اس کو خدا بنا لیا. تو جناب that was a quick overview of this reading. اور اس کا اظہار ہم نے یہ دیکھا اور اس کلاس میں ماشاءاللہ یہ تو میرے پیارے عزیزوں, یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو شروع کا جو کیس پڑھا ہم نے جان منڈل کا, جان منڈل نے بھی اسی اوریجن آف ویسٹرن سوشل سائنس کو جب چھوڑا ہے نا, اور تو پھر آلٹرنیٹو ماڈل نے اس کو عجیب دنیا دکھا دی ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, مجھے بھی دے اور میری کمیاں دور کر دے. اور آئی ہوپ آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار یور اٹینشن اینڈ ٹائم. اگر کوئی کامنٹ ہو یا کوشچن ہو تو 1 منٹ لے لیتے ہیں, ادروائز we can then conclude. We can then finish. So thank you very much. Thank you very much, sir. جزاک اللہ. تو میں کوشش کروں گا ڈاکٹر صاحب کو کبھی آن لائن بھی لے لیں گے, ڈاکٹر اسد زمان کو گھنٹے کے لیے, تاکہ ہم ان سے ڈائریکٹلی فیس جاب ہو جائیں. بہت شکریہ. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ Sir, I have a comment to make. جی Sir, I have a comment to make. جی Sir, I really know this presentation. It was an amazing presentation, but I would like to share that I had a honor to meet Dr. Saman Saab in 2019, and I mean, I just had get the time to spend 5 minutes with him. But during the discussion, whatever the presentation is covering, he just told me 2 to 3 words. And he said that when he went for a PhD training, and when he done with the PhD, he said that the PhD actually turned him into a materialistic kind of a person. Then his lots of guidance and the life experience led him to unlearn this lesson, and then how he actually learned the value of human lives. So definitely everything was covered in the slide, but just I just recalled that thing. I just recalled that, so I said I should share with you. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اب میں کوشش کروں گا ان کو لے لیں کسی ٹائم, یا فزیکلی یا پرسنلی. وہ کئی دفعہ میری کلاس میں آ چکے ہیں اور بہت محبت بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ میری کمیاں بھی دور کر دے. ساتھ شکریہ سر. یہ مشکل آرٹیکل لینگویج ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم نے سوشل سائنس کا ذرا کم پڑھا ہوتا ہے. تو may Allah bless you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سر. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. تھینک یو سر.